minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. Ouch. Okay. Wait a minute. Okay. I guess last time हमने ये अचीव किया, right? फेस स्लाइडर वगैरह जो भी बनाया था, स्लाइडर टेक्स्ट आई गेस कंप्लीट किया था. स्लाइडर टेक्स्ट के अंदर भी ऑल्सो सेड कि वी हैव मैक्स डिजिट पीरियड वगैरह जो भी है, राइट. आफ्टर दैट आवाज़ कम करना, थोड़ा लाइट चल रहा है. On slider value change, float value, input a text, value or toString to format filter input text, and length go. Length 0 whatever. हाँ, ये लेंथ के लिए क्या रखा मैंने, मैक्स डिजिट से अच्छा हो कम करने के लिए. ओके, नेवर माइंड. कैरेक्टर इस एंड कैरेक्टर प्लस वन. ठीक है, तो इसको लिंक के थ्रू हम लोगों ने किया था आई गेस. अभी I guess I'll change the namespace. Like I've been instructed to rename the project, so I guess I'll do that. Plus अपना settings करके acceptable object, right? Which should be one and only, to be honest. Like basically a singleton scriptable object. Let's say not really singleton, but basically just one. ये change नहीं होना चाहिए कभी. Right now I guess मेरे UI के अंदर I have prefabs for slider text, for selectors and for content label. अभी content label is surely something. Like it is definitely
a prefab so that we can change stuff that is अगर हम लोग को दोनों को लेफ्ट अलाइन करना है we can do that quite easily, right? The thing is, if I change or accidentally even change the name of the label, then it basically just applies it everywhere, which is kind of problematic a little bit. Because let's say अगर मैंने कभी भी यहाँ पे भी कुछ change करके let's say commit कर दिया, right? Like let's say accident, and let's say I wanted to commit stuff and accidentally applied all. So क्या होगा अगर मैंने कुछ sophisticated UI बनाया रहेगा भर भर की चीज़ों का, right? Like FPS resolution, drop downs, quality settings, भर भर की चीज़ें बना दी, और उसके बाद मैंने ऐसा मिस्टेक किया, तो हर एक चीज़ को मेरे को जाकर मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, विच कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अभी के लिए फॉर नाउ आई ओनली हैव लिटरली वन थिंग, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट for the future it's definitely going to be something, right? So what I can do is content label is fine, right? But the thing is I'll get rid of this as a prefab. Let's just have one FPS slider, and इस FPS slider के अंदर भी जो prefab है इसको भी unpack करना है, and we'll just say कि this is a content, right? I'll just call it content, right? Content के अंदर we don't really want a slider text for right now. अपने पास ऑलरेडी स्लाइडर टेक्स्ट का प्रीफैब है, दैट इज़ फाइन. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वांट इट टू बी. दिस इज़ माई बेस कॉन्टेंट. इट्स हाउ इट्स सपोज टू बी, राइट? आई जस्ट नेम दिस FPS, राइट? दैट्स फाइन. And then what I'll do is I'll attach a code onto this content. Now let's, right, I'll go to main scripts UI, and with slider texts I'll create one more, and this will be called as content, right? Or basically menu content, which is fine as well, right? Yeah. This will also be under the namespace rs.ui for now. I think this should definitely go under a namespace that goes kind of further. Like I guess menu can be a part of the namespace instead of part of the class. Like I intend to make two things such as content and content group. So I don't want to say like many content and many content group. I can just be like UI.menu. That is fine as well. These are all part of the menus, right? That is fine. Yeah. So I guess I'll just get rid of this, and it's fine. In here I'll have a reference to the TMP text, right? I would also like to arrange the using directives so that it's easier to see in the preview code in the inspector. I think I'm audible, right? Just a minute. UI होला. ओके, आई गेस अभी मेरा चैट अनेबल हुआ. सो ठीक है. एंड व्हाट्स ASA, व्हाट्स दैट? ऑलराइट, व्हाटएवर. राइट. सो TMP टेक्स्ट के साथ आई जस्ट से इट्स सपोज टू बी अ लेबल, राइट? आई गेस मैं तुम लोग का ये चीज़ मैंने लेक्चर में कवर कर लिया. इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे मैं थोड़ा और उसको फाइन ट्यून करूँगा, राइट? बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम इन दिस लाइव सेशन एंड नॉट इन द लेक्चर्स. सो लेबल, ऑल राइट.
we attach the label, pretty simple, attach the script and it starts working further. And we also just want to say कि I'll be creating a public start function, right? The reason to make it public is so I can add a button in the inspector that will allow me or help me to call this directly. I don't want to create a third party function or a custom method, whatever. I'll just recall the main method or one of the main methods, whatever. So that is also fine, and it also serves the meaning that it allows or it basically starts up this content class. So I'll just say label.text will be equals to name, the name that belongs to the object, that is game object का जो नाम है, such as content का नाम है, sorry content, इसका नाम है fps, so that's fine, right? अभी इसका जो settings है such as हाँ such as कि इसका text वगैरह जो भी है reference लेके रखना, ये मैं ऑलरेडी लेके रख देता हूँ, राइट? सिंपल. सो सारे के सारे प्रीफैब्स पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा. आफ्टर दैट I guess that is it, right? That's it, I guess. I'll just create an editor class. The thing is, I can definitely create an editor class here, right? Definitely in this section as well, but I guess I'll just go ahead, go to scripts or maybe the main folder, and I'll create a folder called as editor. Now editor is a special folder. Special folders are a thing in Unity, right? Whenever a folder is named with as one of the special keywords, it adds extra meaning to the contents of that folder, such as whatever scripts we make outside of the editor folder will be in an assembly called as assembly c#.dll, and whatever we put inside of the editor. Now let's say I'll create content editor. It will go inside of the assembly that says assembly c#editor.dll. Okay. These are both different assemblies, but assembly c# is basically the base assembly, and every other assembly is sure to be referred into the C# assembly. That is the default assembly. Right? The default assembly will always reference any custom assemblies in this project, right? पानी पास करना, पानी. Alright, so there's that. So I'll just go here, and this is one of the methods I can do this by, right? Varna I can also just write or create a class right here, which is also viable, जो मैंने lecture में करा हुआ है, if कोई भी student देख रहा है इसको, right? Like content class, content editor यहाँ पे बना के रख सकते हैं. This is fine as well. But in here you have to using Unity editor, which can be problematic if you're trying to build this application. That is, ये build करने नहीं देगा. So you also have to attach if directives. That is, if we are working on Unity editor, only then use this directive. And also, if Unity editor isn't present, then of course ये class में error आने वाला है. So error को prevent करने के लिए भी we need to write another if directive between these classes. So this is the second way of doing it, right? The one that I would recommend is having a different class, essentially a different file in a different assembly, that is an editor only assembly, right? This is better. So in here I'll just inherit from the Unity editor, and I'll also attach the attribute that says custom editor type of content. Right now this class should also be technically a part of the rs dot
UI dot menu. Right. Take editor assembly image. We don't need to create specific namespaces for editor in this case. Where that is also a viable option. You can just go rs.editor. But since we are in a different assembly, that's fine, I guess. Right. So content editor के अंदर I'll override this function that is called on inspector GUI, that is on inspector graphical user interface, whatever. So if I just draw it, it's going to redraw my custom or my base inspector, that is all the scripts and labels and everything else. Right. If I get rid of this, it's basically not going to draw anything because we are instructing it to not do anything. Right. So yeah. So basically, if we want to draw our base stuff, we can draw stuff manually, or we can just have कि पहले जो draw था उसके ऊपर we add extra stuff. So let's say if I just call base dot inspector GUI, which is fine, I can then go ahead and draw layout elements. Right now, custom editor only supports layout elements, whereas property drawers support non-layout elements. Layout elements are the classes that includes GUI layout and editor GUI layout, right? And non-layout classes are basically GUI or editor GUI. So basically ये दो ही there is two unique classes, and both of these classes have its own layout iteration and a non-layout iteration by just adding a word. So essentially there are 4 unique classes, right? But the names are only unique as long as 2 unique classes, but whatever, you get my point, right? So layout classes do not require setting the position manually, that is वो हर एक element का position, वो कहाँ पे draw होएगा, कितना spacing रहेगा, the overlapping logic is automatically handled by the base class. So we don't need to worry about 2 variables or basically 2 components being overlapped within this inspector. Right? Sorry, 2 variables being overlapped, not component, 2 properties or fields or whatever. That is, जो भी सब है serialized way में या बराबर तरीके से दिखेगा. Basically, we'll talk more about property drawers as well, but let's just get over with this normal editor. So I'll just say if GUI layout, which holds a function called as a button that allows you to draw a custom single press button, and it returns a boolean, which is why we are pressing it inside of the if condition. That is, the button only returns true for when it is clicked, right? So it makes a lot of sense to just put it inside an if condition. That is, इसका मेरे को नाम देना, right? बटन का I'll just name this validate. Right, and I also post a height of 30 floating units. So what it does is it just creates a button, that's it, and whatever I write inside the button will then be executed, such as I cannot write the print function since I am not inheriting from a mono behavior, right? I'll just write whatever, some gibberish, and if I press this button you'll see it prints stuff, which is great. Now to beautify this even more, I'll just add spacing, that is GUI layout dot space. The space would be 5 pixels, right? Now you see it takes care of everything automatically. Like बटन कहाँ पे ड्रॉ करना है, लेबल के बाद स्पेस कहाँ पे डालना है, लेबल और बटन के बीच में, बिकॉज वहाँ पे मैंने कोड में भी दोनों के बीच में लिखा हुआ, राइट? द बेस इंस्पेक्टर, आफ्टर द बेस इंस्पेक्टर इज ड्रॉन, draw a space and get a button. So basically layout takes care of everything. If I wouldn't be using layout, that is GUI.button, it asks for a rect position,
राइट. अभी ऑफ कोर्स राइट पोजीशन में यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज the layout base class won't be able to draw non-layout elements. It will just throw an error and nothing more. But basically we can then control कि button exactly कहाँ पे draw होगा. You want to draw button outside of the inspector, you can draw it, but of course दिखेगा नहीं inspector में. You want to draw a button while overlapping the label का property या label का field. You can do that if you give out your own position, custom position वगैरह जो भी pass करता है, then we can do whatever stuff we want. So that's the difference between layout and non-layout, right? Layout is easy, non-layout is a tad difficult. That's the basic difference. But now let's say I also want to disable the script. ये जो जहाँ पे मेरा mouse कर सकता है, I want to disable this. So what I can do is I can call draw properties excluding from this serialized object, right? From this serialized object. That means this is a mono behavior that can be serialized on the inspector and उसके अंदर के सारे fields भी individually serialize हो सकते हैं, which requires this attribute that is also implicitly available in the public accessor, that is serialized field, right? The field can only be serialized if its container can be serialized, right? So which is why custom structs या फिर custom classes के ऊपर serializable attribute भी लगाना पड़ता, right? So we are looking for this serialized object. Now this serialized object is very similar to that of this game object. So when we write game object, it just passes us the game object that this component is attached to. So when we write serialized object in an editor class, it just says it basically returns as the serialized object that this custom editors का type is attached to. मतलब basically जो inspector है वो, right, that is content. So content जब भी serialize होगा उसके साथ साथ content editor class भी execute होगा and उसका on inspector GUI का functions run करेगा, right? And I want to then exclude some properties. Now excluding properties, let's say if I write label, right, variable का जो exact नाम लिखा है, if I pass it in a string, that is it intakes a parametric string array, that is properties to exclude. I can see मेरा script या फिर sorry मेरा label गायब हो गया because मैंने बोला label को exclude करना है. So now I need to find the name of the script. And luckily इंटरनेट पे ढूंढने के बाद it turns out to be m_script, right? So there's that, and I already have a validated function, but so I already have a validate button. Now I just need to create a validate function within this content class. But there's also one little flaw, is that none of my serialized variables will now work, right? If I just create or go ahead and create public int x on the class that is content, I'll just be seeing कि ये value change नहीं करता. It's because the serialized properties are not updating or even applying, right? That is, for whatever we pass as a serialized field, when we change the values within the inspector, we are changing the values of a serialized property, which then further applies those changes to the variables on which the attribute was attached, right? So basically यहाँ पे we explicitly या फिर implicitly have serialized field if public access are available है, but still I just get rid of it. So basically whenever I make changes to the serialized property of the variable x, it does not change the value of the variable x. Then serialized property का value change होने के बाद, like after we end the editing, जैसे कि mouse छोड़ देते हैं, right, we leave the mouse, या फिर we get out of focus, we write a value and we just go out of focus, right? In that case it then reapplies
the value from the serialized property back to the actual variable. So that process is not working right now. So make sure that process works, we need to call serialized object.update first, right? Like update this property with the latest value, that is fetch value from the variable. Then draw the base inspector and basically, you know, fetch values from all of the serialized variables, and we are allowed to change them, right? And after they are changed, also apply them. So I'd like to create a fake scope between these two functions because I think it's more organized this way, right? So yeah, there's that. Nice, this is fine. Alright, so after this, if we go back to Unity, oops, if we go back to Unity, we are now able to basically fetch the value that is 89 onto the variable x. We are able to change it, and for when we apply it, that is by pressing enter or by getting the mouse out of the focus, we then are applying the value of 95, the new value of 95 to that variable x, right? So before editing it fetches the value, and after editing it applies that value. And while we are not editing, of course, इसके बाद जो last वाला था वो दिख रहा है उसको, right? So ठीक है, that's how it works. So content editor is kind of done, right? Now I'll just create one more function right here. अच्छा नहीं, ज़रूरत नहीं है. Okay, start function है ना, my bad. Yeah. So I just need to call the start function right here as well, right? So I can just go ahead and say the base target. The target is the object being inspected. What object are we inspecting? The object of type content, right? So basically, if target is an object, it can be converted into content because content is an object as well, because every monobehavioral class is an object, to be honest, अगर उसके बेस पे तुम लोग जाते रहोगे तो. So basically I'll just say target as content dot start, right? Because start is a public function within the content class, right? So there's that. So this is kind of done. So I can just go ahead and अगर मैं यहाँ पे face पे जाता हूँ and if I just validate stuff, as you can see उसने नाम change कर लिया, right? किसका? इस label का नाम change किया to the name of this game object. So I don't need to go every time and just say कि हाँ ठीक है, यहाँ पे भी नाम change किया, उसके label पे जाके अलग से explicitly नाम change किया. That is not good, right? Basically validation पे click करने पे automatically हो जाना चाहिए सब कुछ. So that's fine as well, but of course we lose the ability to double click on the script and open script quickly. I just have to right click now and go to script. I'll get rid of this integer x, and of course even if अपना prefab कुछ चीज़ों को override करता है, right? And let's say if I fail to click the validate function, right, in that case अपना start function run time पे उसको वैसे भी change कर देगा, right? जैसे कि let's say if I go back to this prefab, कहाँ गया UI content, and I'll just say label के अंदर base, right? Of course यहाँ पे भी उसने change कर दिया, but when I press play it automatically changes to FPS. Why? Because ये script उसको force कर रहा है change करने के लिए. एंड अगर अपने को एडिट टाइम पे भी देखना है कि वो कैसा दिखेगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू होप कि रन टाइम पे सब बराबर दिखने लगे. वी आल्सो वांट टू इंस्पेक्ट स्टफ एट एनी टाइम. वी क्लिक दिस वैलिडेट बटन एंड इट वर्क्स, राइट? एंड नाउ टू increase its efficiency even further, right, we will now be adding an element of slider text to FPS. But the thing is अभी this needs to be overridden. एंड अगर कंटेंट में जाके मैं कुछ भी चीज़ ऐड करता हूँ वो स्लाइडर टेक्स्ट के साथ आ जाएगी. दैट इज इट्स जस्ट बेसिकली अ हैंगिंग स्वॉर्ड दैट कैन बी अप्लाइड और रिवर्टेड इन टाइम. बट ऑफकोर्स मैं ये भी कर सकता हूँ कि
I can vow to never accidentally apply this. Oops. Right. So basically मेरे पास जितने भी अलग अलग चीज़ें थी. Now let's say I'll create something called as uh, resolution, right? Now this resolution does not have to hold the slider text, it can just hold a simple कहाँ गया drop down, right? But for whenever I accidentally make changes to the content, let's say इसका element में बोलता हूँ कि I now want to create an empty game object, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक empty game object तो बन जाता है, and if I try to revert it, it just reverts back to slider. So basically it is kind of sensitive, right? We have to make sure कि कभी भी prefab को गलती से कुछ ना कर दे, right? So we specifically have to be aware to not make a mistake of reverting or applying accidentally onto this prefab, which is not that difficult. Yeah, it's also possible, many do that, but there is one more way we can prevent that possibility as well, by creating prefab variants, right? So I can just name this, it's supposed to be content FPS, right? And for this I'll just go to the list view, right? And FPS के अंदर I can just say I'll add the slider text and I'll actually apply it. That's fine. If I go to content, यहाँ पे apply नहीं हुआ, उसके variant पे apply हुआ है वो. So not only I get so many prefab variants, I also get a list of what options are available, and if I ever want to change something, I can just go to an individual asset as well without ever going into the scene, right? I can then use this specific prefab variant in main menu or in game settings or wherever I want, right? So there is that as well. In some games there are also settings that are different from that of the main menu and in game, right? Like let's say a game of Rainbow Six for example, right? वहाँ पे मेन मेन्यू पे जो सेटिंग्स दिखते हैं, this are not the same settings that are available in game, right? They both hold a different set of contents, right? Now the hierarchy of our settings content will be the same throughout the entire game. That is, we have a pop-up, the main object, जिसके अंदर we have a title and a scrollable content area, right? Within which we then have categories, that is selectable areas, drop down and so more. Wait, what is content area? Ah, okay, pop out बनाने का था, right? Pop up के लिए we have the title. Okay, I understand, right? Content area, categories and everything else, right? So basically we will be having multiple contents and we'll just disable and enable between them. So it's good prefab variants, right? So we can just select which variants to instantiate and which variants to not instantiate, or basically control or enable. We can just create an additional list of viable contents as well, right? एक list बना सकते हैं, serialized list, जिसके अंदर we can just drag and drop the valid content that you want to provide. Like main menu पे I'll just give out content FPS, and in game I won't be providing the FPS का content, because for some reason my game does not require or cannot handle FPS change at runtime. It only does it at main menu for some reasons, right? So that is just an example. So ठीक है. After this FPS, I guess I'll just go to make it function even more, right? So ठीक है. For now, this slider does a little bit. Oh, wait. Did I accidentally remove all of this? Listeners,
Okay, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, right? That is on slider value change. This function should have been here, and filter input text on input commit. Okay, yeah, all right, yeah, fine, and I guess I'll just stick with these names. These names look a little bit better to me, and of course I would have to bind them again, which is fine. This was supposed to be on input value chain, and this was supposed to be on the input end. Alright, so alright, yeah, fine. Within the slider text, we also have some issues. Now let's say I want to bind मेरे settings का FPS value right here, right? But of course वो bind नहीं कर पाओगा. Why? Because it is not a property. So let's say if I were to make it a property, that is get set, that is I would be able to bind it dynamically, but only if it were a float. Then only of course वो dynamic binding होगा उसका. So we can also just create a private int FPS and just say कि it's going to get the underscore FPS and it's going to set the underscore FPS to a value by converting into an integer, right? Why float? Because if you see slider takes a single, the dedicate of one value changed int takes a single, which is the most superior value type. Like float, anything can be converted into a float, so that's fine as well. So settings के अंदर I can just bind dynamic FPS, but the thing is I don't want to accidentally remove this thing as well for when I want to clear all of my listeners. Now let's say I have like 20 listeners, which is a possible outcome, right? Then while clearing everything, I would just be like, instead of pressing the minus, I'll just reset everything, which also loses my existing member, which is not something that I want to do. So what I'll do is I'll create yet another on value change event on input slider ka class. I'll also call this slider text, which is better. Alright, उसके बाद I guess I'll just create a public unity event, right? That is on value change, right? Basically we can call it that, or we can also call it on update, but that just gives out the wrong message कि update function में call हो रहा है वो. So not really, right? So we can just call it on value change, which is fine. And यहाँ पे I'll put out a generic of type float. And I'll also put it under a header that says events, right? And I guess थोड़ा सा spacing भी दे दूँगा, that is up to 5 pixels or maybe 2 pixels, that is standard vertical spacing. Right? So I basically have literally the same event, right? So whatever I want to bind, I can then bind right here. But of course अगर मैं इसको reset करता सब निकल जाता है, which is also a bummer, because it then also resets all of my main slider and input का references, right? So ठीक है, I also want to pass out a default value in them. So I'll just call this header के बदले references, right? So I'll also post out
a reset function, right? Now this is a unity message, of course a main function, जिसके अंदर I'll just write slider will be equals to get component in children, that is called as a slider, right? And then I'll just say input will be equals to again get component children tmp underscore input field, right? That is only for when it is not present. अगर हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइडर के वैल्यूज ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिए हुए हैं देन दिस शुडंट हैपन, राइट? It can be problematic in some cases जहाँ पे we attach more than one slider onto slider text, which is not going to be possible because अपना slider text is a finished product, so वो तो नहीं होने वाला, but फिर भी just in case, और मे बी वो केस के टाइम बाद में वापस ऐड करते हैं आई गेस, so this is fine as well. Alright, so basically for when I reset stuff it doesn't lose anything, right? I'll just add 2 members, I'll reset and only my list goes away, everything else stays intact, which is nice, right? So ऑफ कोर्स अगर मैं मैक्स डिजिट्स वगैरह कुछ चेंज करता हूँ ऑफ कोर्स रीसेट करने में वो भी निकल जाएगा, बट दैट इज़ समथिंग वी हैव टू बेयर, राइट? सो ठीक है, आई गेस यहाँ पे मैं सारे के सारे ओवरलोड्स पास कर दूँगा एंड दिस इज़ फाइन, वेरी मच फाइन, राइट? आई रीसेट एंड इट जस्ट गेट्स द कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन. इसको निकाल भी देता हूँ एंड आई जस्ट रीसेट इट गेट्स इट फ्रॉम देयर. एंड अगर मैं कंपोनेंट भी निकाल देता हूँ, रीअटैच करता हूँ, देयर इज़ नो लॉस ऑफ डेटा, ऑफ कोर्स वो फेच कर लेता है रीसेट करने के टाइम, दैट इज़ फॉर व्हेन वी अटैच अ कंपोनेंट इट जस्ट रीसेट स्टफ. बट एक और चीज़ हो गया कि मैंने 2 स्लाइडर टेक्स्ट डाल दिए एक ही जगह पे, विच इज़ ऑल्सो फॉल्टी, सो वी डू ऑल्सो वांट डिसअलाउ मल्टीपल कंपोनेंट का attribute, so that I am not able to add another slider text on there, right? And ठीक है, right? और कुछ किया नहीं मैंने, right? We also want to disallow multiple component on content as well, because I don't want to have more than one content, because why would I, right? So ठीक है, I guess this is, I hope this is helping you out, because there are very less tutorials available online for UI, especially at depth like this, I guess. No, I am not saying what I'm teaching is correct, but it is definitely something, right? Something you should consider to use. And what were the X options? Okay, yeah, that I guess I'll get rid of that because उसका भी प्रीप्रॉप्स वगैरह जो भी है बना के रखेंगे हम लोग. For now this just creates settings and इसके अंदर we have total control over the prefab as well, that is label पे जाके we can change anything, like इसको right align के बदले we can just give it left align, इसका right का bleeding निकाल के रख सकते हैं and it just applies it everywhere. So yeah, this is great, I like this, right? So we have completed a content. Abhi I can just keep on creating along with the slider something else, such as a drop down that fetches the resolution and changes it at runtime. But एक problem दिख रहा है मेरे को अभी कि for some reason मेरा slider text update नहीं हो रहा है. Why? What happened, bro? Where is the function? What happened? रीसेट करने पे सब निकल जाता है ये भी. I did not know that, but let's see if I just bind it here again, right? And if I were to reset this, ये तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, right? I guess one time bug probably, maybe I messed something up, but ठीक है, I hope कि ये बार बार ना करना पड़े. We'll see if दूसरी बार होएगा तो. For now I literally have no speculations.
and I barely noticed it. I mean hardly noticed it. अभी just देखा मैंने. Okay, ये epsilon value वगैरह जो भी है. On it. Wait. Alright. I hope. एंड मेरे को ये भी एक दिखना था कि लास्ट टाइम मैंने इसको क्लैंपिंग कैसे किया था, बिकॉज आई ऑनेस्टली हैव फॉरगॉटन. इम्पोर्टेंट इनपुट टेक्स्ट मैथड क्लैम्प. ओके, टेक्स्ट को मैंने क्लैम्प किया है स्लाइडर वैल्यू equals to float dot parse text. All right. Okay, so I clamped the text and nothing else. Yeah, that is great as well. And उसको string पे डाला है within a given format. All right, all right. That's good. That's good. I guess लेक्चर में मैंने एक लंबा राउट लिया था. इज़ दैट इनपुट टेक्स्ट को मैं फ्लोट डॉट पास कर देता हूँ या फिर पार्सिंग कर देता हूँ. उसके बाद आई अगेन वुड कॉल द ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंजर फंक्शन, which is also fine, I guess, but this is definitely much better. Alright then. Content done. Content के अंदर ज़्यादा content नहीं है. The irony of that. But ठीक है. अभी let's say I create, or basically I duplicate this, and instead of calling it an FPS और किस चीज़ का स्लाइड होता है, master volume, let's say, right? So let's call this master volume. I validated it and वो master volume बन जाता है. ठीक है, nice, not bad. I think ये दोनों भी अभी भी सेम ही prefab है, right? Because if I change stuff in one thing, that is, अगर इसके prefab पे जाके if I were to यहाँ पे जाके अप्लाई टू ऑल प्रीफैब वेरिएंट पेरेंट नहीं करना है अपने को, राइट? बट ऑफ कोर्स उसके अंदर जाना पड़ेगा, विच इज स्टिल पॉसिबल टू फक दी एंटायर थिंग अप, बट इट्स जस्ट दैट के चांसेस आर वेरी मिनिमल. बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक गेम ऑब्जेक्ट, राइट? सो मास्टर वॉल्यूम में भी ऑटोमेटिकली गेम ऑब्जेक्ट आ जाता है. वाई? बिकॉज इट्स अ प्रीफैब वेरिएंट ऑफ द सेम थिंग. सो वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट? सो बेसिकली व्हाट वी डू देन इज वी अनपैक दिस, not unpack completely, just normal unpack. So क्या होता है, वेरिएंट से निकल जाता है and it then becomes a prefab, which we then again create a prefab of as another variant, जिसका मैं prefix रखूँगा content master volume. Alright, so this both are now two different things. Of course इसका नाम मैं change करके रख सकता हूँ master volume and so on. एंड हो गया, सब बराबर है. स्लाइडर टेक्स्ट आ गया. अभी ऑल्सो वन मोर थिंग कि स्लाइडर टेक्स्ट के अंदर दोनों के स्लाइडर का वैल्यूज़ या फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफरेंट रहना चाहिए. लेट्स से इस स्लाइडर टेक्स्ट का वैल्यू जाता है 0 से लेके 1 तक एंड होल नंबर्स अलाउड नहीं है, राइट? बट इफ़ आई वर टू अप्लाई इट, क्या दूसरे स्लाइडर में फ़र्क पड़ता है? नो, नॉट रियली, राइट? आई ऑल्सो कैन नॉट जस्ट अप्लाई दिस स्पेसिफिक प्रीफैब को ओवरराइड नहीं कर सकता मैं उसके पेरेंट पर, राइट? बट अगर मैं स्लाइडर टेक्स्ट में जाके या स्लाइडर का वैल्यू कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से 0 to 1 कर देता हूँ सब जगह पे, सब बेसिकली मेरा FPS का स्लाइडर भी बिगड़ जाएगा. सो आई डोंट ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट, राइट? बिकॉज देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी थिंग्स वेर यू कैन मिस योर प्रोजेक्ट अप जस्ट विथ वन सिली मिस्टेक, राइट? अभी व्हेन अ UI इज वेल एस्टैब्लिश्ड, थिंग्स लाइक दिस और मिस्टेक्स लाइक दिस विल रियली get in your head. So it's good to be aware about them and to minimize the risk of accidentally doing such mistakes, for which we have done a lot, right? And yeah, that's fine. I'll just apply this to the prefab variant. इस वेरिएंट के प्रीफैब के पास अलग अलग वैल्यूज. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मेन प्रीफैब में जाके आई डोंट डू
stuff with sensitive variables like minimum value, maximum value. बाकी rect transform के साथ I can do whatever stuff I want, right? That is fine. But I don't want to mess with the slider का component and everything because that is just going to mess everything up, right? So that's fine as well. So take care. We still have a lot of control over our UI. It's now very easy to add new stuff and to modify all the stuff at once together. It's also very easy to have a look at what contents are available in the UI, right? So yeah. अभी किसने तो कमेंट पे पूछा कैन यू मेक अ गेम लाइक CS2 फ्री फायर चिम्प. यस आई कैन. I'll only require at least 10 years, right? If someone is willing to pay me for 10 continuous years, a good amount to make a game like CS2, I think I can do it, right? Yeah. Creating the locomotion of the CS2 alone is going to take a lot of time, right? Like if I put or keep working on it non-stop, the movement and everything will only be done in like a month or maybe more, right? So उसका मूवमेंट बनाने को महीना लगेगा अगर मैं कंटिन्यूसली उस पर पूरा दिन काम करूँ, right? So you can only imagine बाकी सब स्टफ को कितना टाइम जाएगा, right? लेट्स से गेम प्ले भी रेडी होगा, मल्टीप्लेयर नेट कोड बनाने का तो काफ़ी टाइम जाएगा, a lot of time, because a competitive game only revolves around how good the netcode is. It isn't supposedly like ये caliber के games एक skill set में fit नहीं होता. It's very difficult for one single person to make such a game or to insert all of the stuff in a game, like gameplay बनाना, multiplayer बनाना, right? उसका UI UX design करना वगैरह जो भी है. This is not something that should be done by a one single person because it's just an immense waste of time. There should be a team with different sets of expertise. So wait a minute. So वैसा होना चाहिए. But yeah, definitely, why not, bro? CS2 को कितना टाइम लगा? Thousands of people making it, still took like more than 5 years, right? 10 years for someone like me is definitely an unrealistic goal as well. But of course, team का requirement रहता. There are people like Dani and everything जो खुद के games compete करते, like क्रैप गेम वगैरह सुना होगा. It's a solo game, right? पूरा गेम प्ले बनाया, मल्टीप्लेयर बनाया, नेट कोड बनाया, एंटी चीट बनाया, एवरीथिंग इंक्लूडेड. उसने अकेले नहीं किया. लाइक जो ओनली सीज वीडियोस, लाइक अभी वीडियोस डालने में बंद कर दिया उसने. कितना मेहनत लगा उसको, उसका डेवलप्स वगैरह देखोगे तो इट took him years to make that simple of a game, and that game is actually not simple, but फिर भी a game like that can take years of an individual who is utterly experienced. So that's a different topic, I guess, but whatever. So I guess अभी FPS पे, सॉरी नॉट FPS का बोल रहा हूँ मैं, CS के नाम से मेरे को FPS आता है, यहाँ पे भी FPS लिखा हुआ है. UI पे और contents I'll add after the break, I guess. What is this text? Alright, I guess I'll start the break. 5 minutes लेके आएगा, लेकिन I guess I'll take 10 minutes. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you.
I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes.
right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait.
I'll be back shortly. I know you're waiting. Yes, definitely. Indie developers will. It will take at least 10 years. If you want a game as good as CSGO, like उसका cheap copy चाहिए, ऊपर से सेम दिखता है, like अंदर से सेम फंक्शन नहीं करता, then of course एक साल में भी हो सकता, right? चीप कॉपी बनाने के लिए. वैसे तो if you search on YouTube how to make CS2 in 10 minutes, I am 100% sure कोई ना कोई वीडियो तो आ ही जाएगा. But of course it's an extremely cheap copy then, right? प्रीमेड वगैरह सब यूज़ करना पड़ेगा एंड सो ऑन. इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट. ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा प्रोजेक्ट में, कुछ नया फंक्शनलिटी ऐड करने को टाइम लगेगा एंड फिर इंटरेस्ट लूज हो जाएगा डेवलपर का. सो यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग व्हेन यू आर बीइंग इनटू अ रियलिस्टिक project. I'll be back in a minute. Okay, I lied, that was less than a minute. So जो भी था, FPS मास्टर वॉल्यूम अपना सब सही चल रहा है, नाइस. बट इसके बाद I want something else. Now let's talk about sensitivity or maybe resolutions or whatever. जो भी है, एक group बनाना, right? Like let's say if we were to create hypothetically sensitivities which is also viable in a game like Rocket League, right? Why? Because of course controllers आएगा, उसका steering sensitivity आएगा which is also available for keyboard, right? There is sensitivity in Rocket League as far as I know. So basically x and y क्या है, we can also name it sensitivity x and y, which is also fine, but I guess it would be better if वो अपने खुद के ग्रुप में होता. For now it just looks like an individual element, which is also something we can solve to make this UI more attractive, I guess. Right. So I guess I'll just create a single game object, right? And I'll just name this group, right? Like इसका height है 100 का, which is totally fine, not an issue. इस group के बाद I'll then want to create an or a title, right? Now let's say इसके अंदर भी मैं actually label वगैरह जो भी है बना होगा, right? Now let's say if I want to create a label and everything else, I try to just take another content, right? I'll create a label and इसके अंदर के label पे I want a defined height, to be honest, right? So basically if I want a defined height, I want to add a vertical layout group where I control everything but this, to be honest, right? And यहाँ पे I guess I'll add a vertical layout group, which means I now have to add two vertical layout groups, which basically does the same thing. So label का height I'll just post it out as 100, text का height 90 and the extra game object का height 10, right? अभी text को I can make it center aligned, and a game object I can just add an image which just essentially creates a separator, right? Now I guess I can simplify the hierarchy of everything else. Basically what I want is इसके अंदर I can then keep on adding multiple elements जब इसके खुद के पास height रहेगा, right? Let's say 200 है इसके पास height, which is fine because slider को let's say if element के पास भी ज़्यादा height होगा then of course slider के पास height आएगा and so on. But ठीक है, slider के अंदर
एक्स्ट्रा कंटेंट आना चाहिए, दिस कंटेंट के अंदर कंटेंट आने चाहिए. सो बेसिकली आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट. इफ दैट स्टिल डजंट मेक सेंस, I'll start from the scratch, and again I'll call this group, which is supposed to be a content group. And to simplify the usage of vertical layout groups, I won't be creating a sub label, right? I'll just add a vertical layout group right here. Now this layout group also exists in the content, right? जहाँ पे सब पे height 20 20 20 लगा हुआ, which is also fine I guess. Okay, yes, ये उसका है, right? बॉटम से आई डोंट थिंक फ़र्क पड़ेगा कुछ. सो बॉटम कैन बी 0, राइट? बॉटम का स्पेसिंग डज नॉट रियली मैटर इन दिस केस, इन दिस स्पेसिफिक केस. सो गेम ऑब्जेक्ट को आई जस्ट इंस्टेड से दिस हैज़ टू बी अ टेक्स्ट विथ अ टेक्स्ट मैश प्रो, बेसिकली अ बोल्ड टेक्स्ट मैश प्रो जो सेंटर अलाइन रहेगा, राइट? और इसका हाइट होगा 90. इसका फॉन्ट साइज वी कैन पुट आउट टू 60, राइट? या 48 और वट एवर, जो भी इस टाइटल से या फिर जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा साइज रहना चाहिए इसका. सो आई गेस 60 इज़ फाइन, राइट? एंड आफ्टर दैट आई जस्ट नेम इट टाइटल, नॉट बैड, राइट? आफ्टर दैट आई क्रिएट एन एडिशनल इमेज जिसका हाइट होगा 10, एंड आई कॉल दिस सेपरेटर. इसको भी नाम दूंगा टाइटल टेक्स्ट, राइट? एक्चुअली TMP भी निकाल दूंगा. देन आई हैव सेपरेटर, देन आई हैव अनदर फोल्डर कॉल्ड एज सब कंटेंट, राइट? नाउ अगेन दिस इज गोइंग टू होल्ड दिस लिटरली द सेम वर्टिकल लेआउट ग्रुप, एंड यहाँ पे भी विल कंट्रोल द विड्थ एंड नॉट द हाइट. एंड ऑफ कोर्स ग्रुप पे भी एक और चीज़ ऐड होगा, दैट इज एन इमेज, राइट? नाउ दिस इमेज कैन बी a bit transparent so that it suggests कि we are in a group right now, right? So basically इसका height मेरे को अगर बड़ा सेट करोगा, आई कैन ऐड सब कंटेंट टू दिस. सो बेसिकली यू सी इट क्रिएट्स अ ग्रुप. अभी सब कंटेंट के अंदर आई कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग कंटेंट, कॉल इट x basically, right? And then call another content that says y, that is sensitivity x and sensitivity y. Of course ये ओवरलैप होगा बिकॉज दोनों पे हाइट सेट नहीं है. सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेट हाइट मैन्युअली, right? That is, we want to have at least some control over whatever we post in the UI, right? And only relevant control, like height is the only thing that matters in this context. So basically we are only allowed to set height and nothing else, right? So take care. I guess I'll get rid of this and I'll call this group. That's correct. एंड इसके ऊपर भी एक और स्क्रिप्ट लगेगा, राइट? I'll go to scripts and I'll call this group. अभी ग्रुप निकल गया. I'll copy and paste the namespace right here because all of them needs to be in the same namespace, right? And I also want to inherit from content itself, right? So basically if अगर मैं ग्रुप यहाँ पर अटैच करता, आई एम एबल टू सी this specific label text which is private in the class content, and since group उससे inherit हो रहा है उसके अंदर भी ये चीज़ आ गया, right? And then there is the public void start. The thing is I would want to add additional functionalities into the start function, right?
विच मीन्स अगर ग्रुप में मेरे को कुछ ऐड करना है, ये उसको ओवर ऐड कर देगा. दैट इज ग्रुप क्लास विल ओवर ऐड द स्टार्ट फंक्शन ऑफ कॉन्टेंट. राइट, लेट्स से अगर मैं स्टार्ट फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, इट्स जस्ट गोइंग टू से कि देर वॉज ए हिडन मेंबर ऑफ स्टार्ट. सो आई कैन ऑल्सो से हाइड बेस मेंबर. वेल, डज दिस मीन कि दोनों का अपना अपना अलग अलग स्टार्ट है? मे बी. राइट, so let's just say if I call the start function with whatever, या फिर उसके बेस क्लास में जाता हूँ, I'll just print name, right? And if I try to print it via group, it should work, right? उसके लिए मैं बाकी के कंटेंट अभी के लिए बंद कर दूंगा, so that now only one content is active, that is group. The thing is, it does not print anything because it is a new start function right now, right? It does not even consider उसके बेस क्लास में क्या लिखा. अगर उसका बेस क्लास पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, then I would be able to set this label, to be honest, which means I do want उसका बेस लेबल या फिर उसका बेस कोड डिराइव्ड क्लास पे कॉल होना चाहिए, which means I need to make it virtual. right? अभी इसको वर्चुअल बनाने के बाद I can simply just override it and I have the start function and वहाँ पे इसका बेस स्टार्ट कॉल हो रहा है. राइट, मैंने प्रिंट निकाल क्यों दिया, आई डोंट नो, बट ठीक है. वापस से अगर मैं लिखता हूँ एंड इफ यू सी इफ आई नाउ कॉल इट, वो ऑफकोर्स बेस फंक्शन कॉल कर रहा है. दिस इज बेसिक C#, बट ठीक है, आई गेस द मोर यू नो. उसके बाद दिस वर्क्स. Alright, उसके बाद I can start adding more stuff to the group, such as उसका सारा content, उसका खुद का transform, rect transform and so on, उसका vertical layout group and everything else. So I guess I'll just say serialized field private rect transform right, that is the rect transform of this own transform. But why do we need to cache it? Because we cannot directly call rect transform, like ऐसा कुछ exist ही नहीं करता. So if we even call the normal transform, we won't be able to get rect properties such as size delta or whatever. So we essentially have to convert it into a rect transform, or we can also just say transform as rect transform, right? इसको कास्ट कर सकते हैं definitely. This works as well. फिर इसके अंदर से we can get rect or size delta whatever, which is also fine, right? We don't always have to get component, जो है कि मैंने lectures में बताया था. We can also cast it, right? So I guess I'll just say instead private rect transform, जो भी बनाया था मैंने like transform, and I can just say base dot transform as rect transform, right? Private new transform. Now this doesn't also have to be a property, इसको directly cache करके भी रख सकता है, which is fine, right? This is fine, it's fine to actually cache it, and of course इसका caching होना चाहिए awake में, like transform will be equals to base dot transform as rect transform, right? So whenever we call this transform, we are then able to get the base rect transform. So basically we just get transform dot rect and everything else, but transform dot transform पे जाएंगे, then we get the non rect transform, that is उसके अंदर अपने को rect नहीं मिलेगा. So that is a different thing, right? So it would be kind of less confusing to name this as rect transform, but ठीक है, since हम लोग को normal transform का ज़रूरत नहीं है, since we are already in the UI section, I guess I'll keep this, right? ठीक है. What next? Then we also want the rect transform for its sub content, and I just realized मैं प्ले मोड पे सब लिख रहा हूँ, जो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा because इधर कुछ अटैच नहीं था, that's fine. So I also want a reference to its the sub content, right? So I'll create a serialized field private again rect transform, and I'll just call it
content, right? That's fine. So इसके content का transform देखो मिल जाएगा, right? Now that we have both of them, we are then able to write further what we want. अभी यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, इट्स दैट कि हम लोगों ने बेस क्लास से उसको इनहेरिट किया, दैट्स फाइन, बट इसका बेस क्लास का वैलिडेट बटन आया नहीं. इट्स बिकॉज इसका एडिटर पे वी हैवंट रियली गिवन उसका बेस फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया बेसिकली जो भी है. सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे जो ट्रू है इसके बाद देयर इज ऑल्सो एन अवेलेबल एडिटर फॉर चाइल्ड classes. If we pass this as true, nothing is going to happen because the group is not a child class, it is a derived class. But it did happen. So basically it works, right? So what do you mean by edit for child classes? If उस तरीके से लिखा हुआ, right? That is true. यहाँ पे पास कर देता हूँ so that we are able to say this. Defines which object type the custom editor class can edit. If true, the classes of the inspected type will also show this editor defaults to false, right? That is basically जो भी एक family tree में linked है, may it be a child or parent, to be honest, in this case parent, वो भी content से उसका editor functionalities उठा लेगा, right? Group is not actually a child, it is a parent, but if you notice carefully, उसका derived class का group is derived class का child class is, or the base class is content, right? So basically the validate button is being drawn for this base content class. जैसे उसका serialized field ड्रॉ हो रहा है, राइट? जो TMP टेक्स्ट का जो serialized field है वो भी ड्रॉ हो रहा है, since it is also private and in the base class inheritance करने पे उसके functionalities आ गया. सो हम लोगों ने वहाँ पे वो भी स्पेसिफाई किया है कि इनहेरिटेंस करने पे एडिटर फंक्शनलिटीज है, फिर एडिटर पे जो लिखा वो भी आ जाना चाहिए, राइट? सो इफ़ वी नाउ क्रिएट अ कंटेंट एडिटर फॉर ग्रुप, लेट्स से अ ग्रुप एडिटर, सो ऑफ कोर्स अपना जो चीज़ें हैं वो भी दिखेगी, राइट? बट इट्स जस्ट दैट कि ये जो एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह है वो उस ग्रुप एडिटर के बेस डॉट ऑन इंस्पेक्टर गुई में आ जाएगा, राइट? इट विल बी द बेस्ड drawer for group editor if we were to create that, right? So base editor निकाल दिया है, फिर base dot on inspector GUI निकाल दिया, so it won't even draw the validate का button because of what I just said. So ठीक है, this is awake, this is start, what's cooking, nothing. Okay, what text? नाउ आई वॉन्ट टू रीसाइज कि मेरे ग्रुप के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो ऑटो साइज हो जाना चाहिए, फिर जो भी है उसका साइज ऑटोमेटिकली फिल हो जाना चाहिए. फॉर नाउ अ टाइटल टेक्स्ट टेक्स अ हाइट ऑफ 90, सेपरेटेड टेक्स अ हाइट ऑफ 10, दैट इज द कंबाइंड हाइट ऑफ 100, राइट? अपने वर्टिकल लेआउट ग्रुप में देयर इज नो स्पेसिंग, तो दैट्स फाइन. एंड अपने सब कंटेंट के अंदर टू बी ऑनेस्ट कितनी भी चीज़ें आ सकती है, राइट? देयर इज़ नो स्पेसिफाइड सेटिंग फॉर सब कंटेंट. सो लेट्स से इफ आई वर टू गो लाइक 200 विच इज़ फाइन, विच मीन्स सब कंटेंट के अंदर और 100 यूनिट्स के लिए कुछ कंटेंट है, राइट? दैट इज नाउ लेट्स से इफ सब कंटेंट के अंदर वी वर टू ऐड अपना जो स्लाइडर टेक्स्ट बनाया हुआ है वो, राइट? विथ अ हाइट ऑफ अगेन let's say 75, right? And to be honest ये पूरा डालने से अच्छा I guess I'll just add 2 FPS sliders for now, right? because इसका लेबल भी आ जाएगा, which is something that I want. But thing is ये दोनों भी कितना करे, 75 that is 150. so इसका हाइट होना चाहिए 150, right? अगर इसका हाइट 150 है then of course इस ग्रुप का हाइट होना चाहिए 250. एंड ऑफकोर्स उस पर थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा बिकॉज दो एफ स्लाइडर थे एक साथ मर्ज हो गए, देर शुड बी सम स्पेसिंग बिटवीन देम, राइट? सो द स्पेसिंग शुड बी लेट्स से इफ इट्स 10, एंड ऑफकोर्स स्टार्टिंग के सेपरेटर के साथ सब स्टिक नहीं होने चाहिए, सो देर शुड बी अ गैप ऑन द टॉप एज वेल, लाइक लेट्स से 20 का डिफरेंस,
वाई नॉट. सो बेसिकली कितना डिफरेंस डाला हमें 30 का, राइट. 20 ऑन टॉप एंड 10 फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स के बीच में, राइट. सो बेसिकली दिस शुड नाउ गो टू 280 एंड ऑफ कोर्स उसके बॉटम पे भी थोड़ा स्पेसिंग आना चाहिए, दैट्स इज 290. सो क्या उसका एंड पे भी थोड़ा बाहर जाते हुए जो भी है दिखना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स अगर इसका लेफ्ट राइट स्पेसिंग वगैरह चाहिए देन ऑफ कोर्स ग्रुप के अंदर ही आई कैन एडजस्ट स्टफ लाइक लेफ्ट एंड राइट पे मैं 10 का स्पेसिंग एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, सो दैट एवरीथिंग लुक्स कंटेन्ड और विल कंटेन्ड विद इन दिस स्पेसिफिक ग्रुप, राइट. एंड ऑफ कोर्स सब कंटेंट के अंदर मैं बॉटम वगैरह इट्स बिकम्स यूजलेस नाउ, राइट. देयर इज़ नो यूज़ फॉर द बॉटम पैडिंग राइट नाउ. इवन इन दिस केस बॉटम पैडिंग का कुछ काम नहीं है, but that is only because अपना content का height is then supposed to be at 1500, but if उसको realistically 500 पे डालें हम लोग, in that case still the bottom padding does nothing, right. Like this is a useless variable now, the specific bottom, right. Of course content पे bottom थोड़ा काम आएगा no, वहाँ पे भी काम नहीं आ रहा, so it was doomed from the beginning, whatever. सो ठीक है, कंटेंट का साइज किधर जा रहा है. ऑलराइट, सो 1000 रखते हैं इसको, राइट. सो एटलीस्ट वी हैव अ स्क्रोलेबल एरिया एंड एवरीथिंग एंड ठीक है. फिर सब कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको सब हमने को मैन्युअली कोड के थ्रू कैलकुलेट करना. I'll get rid of this. No, I won't be getting rid of this face sliders, but whatever. Let's say इसको मैं x देता हूँ, इसको y देता हूँ, and we can name this sensitivities, right? Sensitivity for x axis, sensitivity for y axis, and we can also separate axis, which is just provides more context, right? This is fine, and then we can also name the group as सेंसिटिविटी, राइट. सो एक फटाफट से एक ग्रुप बन गया, राइट. नाउ दिस मेक सेंस कि टू सेटिंग्स व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर दे जस्ट लुक गुड, लाइक दिस इज माय प्रेफरेंस फॉर नाउ. अभी हर एक यूआई डिज़ाइनिंग का गोल अलग होता है, राइट. दिस इज जस्ट व्हाट आई एम डिज़ाइनिंग राइट नाउ. सो ठीक है, नाउ वी वांट टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ इट्स सेटिंग इट्स ओन हाइट, सो दैट अपना यूआई कंटेंट का काम फाइनली ख़त्म होता है एंड वट एवर वी वांट टू ऐड विद द सेटिंग्स वी कैन जस्ट डू इट वेरी इजीली बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग स्टफ. ऑफ कोर्स अगर उसको स्टाइलाइज करें तो अपने को खुद का मेहनत करना पड़ेगा, बट इफ लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड अ स्पेसिफिक सेटिंग वो एक ड्रैग एंड ड्रॉप पे हो जाएगा, राइट. लाइक वी जस्ट हैव टू ड्रैग वन ऑब्जेक्ट, ऐड हियर, रीनेम इट, बूम, डन, राइट. अगर ग्रुप बनाना है वी ऑल्सो हैव दैट फंक्शनलिटी. इंडिविजुअल करना अभी तो काम हो ही रहा है सब कुछ, अभी ग्रुप का भी फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं इफ ग्रुप का रिक्वायरमेंट होगा तो वट एवर. सो आई विल एडिट द स्क्रिप्ट एंड सिंस मेरे पास यहाँ पे दोनों का रेफरेंसेस है, आई जस्ट से टू क्रिएट ए पब्लिक void adjust content height, या फिर resolve height, या resolve content height whatever. बट ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने अभी जस्ट क्लिक हुआ मेरे को, इफ़ हम लोग override start function में, let's say if you write print xd, right, and if you press the validate button which calls the start function, क्या xd प्रिंट होगा? क्योंकि उसके बेस क्लास में हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है. इज इट कॉलिंग द बेस क्लास और इज इट कॉलिंग द डिराइव्ड क्लास का स्टार्ट फंक्शन? सो लेट्स से हो गया, ऑलराइट. सो डिराइव्ड क्लास के अंदर का भी स्टार्ट फंक्शन कॉल हो रहा है. दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ये ओवरराइड है. अगर इंस्टेड ओवरराइड के बदले इफ आई वर टू राइट न्यू स्टार्ट इट वुडंट वर्क probably. Yeah, it did not work clearly, but since override, so even if I call it from, or even if I call the virtual start function, it's going to call the overridden start function, right? That is the difference between creating a new instance of a base member and overriding the base member,
Hello, sir. Rocket League. Very nice context, bro. What a nice comment. Thank you, Naresh. हाँ. उफ. अभी रिजॉल्व कंटेंट हाइड के अंदर मेरे को क्या करना था? आई फॉरगॉट. I forgot. There's too much noise around me right now, yeah, which makes it difficult to think about stuff. So, and also, messes up my pronunciations. ठीक है. I wanted to adjust its height based on all of its childs. All right. So I guess I'll just say for now सबको रिजॉल्व हाइट में डाल देगा, फंक्शन बना के रखा है, बाद में सब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा. अभी के लिए वी जस्ट वांट टू सी इफ स्टार्ट में वो चीज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. राइट. सो आई हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट. राइट. दैट इज इसके पास कितने चाइल्ड है? एट मैक्स 3 ही होने चाहिए, या फिर जो भी होगा, वट एवर, इट डजेंट मैटर. राइट. सो बेसिकली वी रन ए फॉर लूप जहाँ पे भी जैसे इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट एंड आई प्लस प्लस. राइट. एंड इंस्टेड ऑफ इंट वी मेक इट बाइट, बिकॉज ऑफ कोर्स 255 से ज़्यादा चिल्ड्रन कौन डालने वाले एक UI ग्रुप में. राइट. लाइक 255 आर इनफ कंटेंट. सो ठीक है. After we get the transform child count, we then want to say transform dot get child I dot get component rect transform. That is हम लोग को उनका get transform या फिर उसका rect transform चाहिए. But thing is this also returns us normal transform. So what we can do is we can again cast this as rect transform and then say size delta dot y. Now what is size delta? Size delta is उसका height. To be honest, ये height अपने को मिलना चाहिए rect पे से, rect dot height, but this just gives out global height and not from local rect. So there is nothing called as a local rect, to be honest. So basically अपने को जो local height वगैरह जो देता है वो size delta देता है. For some reason I don't know why उसका नाम size delta है, but जो है वो है. It is what it is. And I'll also create a float height variable here, that is 0f at beginning, and I'll also just say key height plus equals to size delta y. Right. अभी वो होने के बाद I'll also then specify transform dot size delta will be equals to new, यहाँ पे x will be equal to transform dot size delta dot x and y will be equals to height that I have just measured. Right. Of course this does not still take into account कि if उसके खुद के vertical layout group में कुछ spacing होगा कि नहीं होगा. Right. Because if I now click the validate function, as you can see unassigned reference exception y, transform group has not been assigned. What? The variable transform of group has not been assigned. All right, ये अब एक में सेट हो रहा है, राइट, या अब एक में सेट हो रहा है. सो प्ले मोड पे जाने के बाद वो आएगा, विच इज़ नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट. बट ठीक है, इसको हम लोग को समहाउ एडिट टाइम पे यूज़ करने के लिए सेट करना पड़ेगा, विच मीन्स वी हैव टू मेक इट ए सीरियलाइज्ड फील्ड. सो ठीक है, इसको रीसेट पे डालता है. एंड सिंस दो सेम ही चीज़ है, आई गेस मैं इसको इस तरीके से रख दूँगा, विच इज़ फाइन. बट ऑफकोर्स कंटेंट इज़ नॉट न्यू, विच मीन्स मेरे को न्यू कीवर्ड हटाना पड़ेगा, विच मीन्स इसका नाम मेरे को चेंज करना पड़ेगा. नाउ आई जस्ट से इट रेक्ट रेक्टी, आई गेस वट एवर. अभी मैं रेक्टी कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ? यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट. रेक्टी वगैरह जो भी अपने पास. डू आई रियली नीड रेक्ट ट्रांसफॉर्म? क्या वेरिएबल का इतना ज़रूरत है मेरे को? नॉट रियली.
I guess I'll just write here where transform equals to base dot transform as like transform. Right, and of course इसको भी वेरिएबल बना दूंगा, दैट इज सिंपलिसिट टाइप, बिकॉज वाई नॉट. राइट, सो ठीक है, ये काम करना चालू कर देगा. सो नाउ माई टाइटल विल होल्ड द साइज एज उसका जो भी हाइट दिया है मैंने. राइट, इफ़ मैंने 75, उप्स माई बैड, इफ़ मैंने 90 10 दैट इज़ 100 प्लस 150 दिया हुआ है, इट्स गोइंग टू सेट द हाइट टू 250. राइट, अगर मैं कंटेंट का हाइट बढ़ाता हूँ, लेट्स से 153.92, एंड इफ आई वेरीडेट स्टफ, इसका हाइट हो जाएगा 253.92. राइट, सो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली. नाउ वी जस्ट वांट टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट सबका अपना अपना स्पेसिंग, दैट इज़ एक्स्ट्रा स्पेसिंग, ये भी कंसिडर करना. राइट, अभी स्पेसिंग कितना था, 20 10 वट एवर इट वॉज सपोज टू बी. राइट, सो ऑलराइट, सो 20 10 30 या जो भी 20 वगैरह आना चाहिए. इसके अंदर के जो सब कंटेंट के अंदर जितने चाइल्ड है वो सबका ऐड होना चाहिए. दैट इज़ बेसिकली सब कंटेंट के चाइल्ड का हाइट ऐड होना चाहिए. सो सब कंटेंट का हाइट ऑटोमेटिकली इस हिसाब से सेट हो जाना चाहिए. राइट, सो बेसिकली व्हाट वी डू फर्स्ट इज सब कंटेंट का हाइट सेट करता है, एंड देन ये मेन वाले का हाइट सेट करता है. राइट, सो बेसिकली नाउ वी वांट टू आल्सो सेट सब कंटेंट का हाइट. राइट, बिकॉज पहले वो कैलकुलेट होगा, वो अपना हाइट सेट करेगा, एंड देन सेंसिटिविटी अपना हाइट सेट करेगा. सो बेसिकली व्हाट वी कैन सिंपली डू इस पूरे चीज़ को एक फंक्शन में डाल सकते हैं. राइट, एंड यहाँ पे फंक्शन पे इट जस्ट एक्सेप्ट्स रेक्ट ट्रांसफॉर्म whatever. राइट, एंड of course I'll just say कि when I want to call this function I'll call it like this. Right, that makes a lot of sense. Right, yeah, that's fine. Since classes pass by reference type होता है, that is, it's basically the same thing. If you know pass by ref or do not pass by ref, classes are reference type. So whenever you pass class as a parameter, it passes by reference type. So उसके अंदर के members पे if we change something, it also changes stuff on the parameter that we passed. If we are passing transform and if we are making changes to the local variable का members, that is the local parameter के members, that is it's going to change the transform का size delta. Right, this is not a copy of transform, this is the actual transform that is being passed. Right, so yeah, ठीक है. Now I also want to call resolve content height for content, to be honest. Right, ठीक है. So if I now press play, of course height गया 250 पे, because again ये vertical yard group is not helping out at all. Right, so we want to also say if transform dot try get component out vertical layered group layout. Right, in that case we want to add height plus equals to layout dot padding dot top, because of course we know bottom padding is useless and height के लिए left height padding का ज़रूरत क्या है. So top is a valid solution. So if I now press validate, वो of course top height कंसिडर कर रहा है, दैट इज 270 तक गया. इट्स जस्ट दैट कि उसने एक चीज़ कंसिडर नहीं किया, दैट इज स्पेसिंग.
राइट. इफ अगर मैं यहाँ पे भी लेट्स से टॉप हाइट डालूँ 50 का, you can say it's going to consider the top height of 50 for both. Now I just want to, or I just want them to also now consider spacing stuff, right? That is plus layout dot spacing multiplied by transform dot child count. But since I'm calling transform the child count twice, right? Now I don't know कि इसका own notation का value क्या है, whatever it is, because this is an external call to the get children count का function, but still I guess I'll just cache it, right? That is where count is equals to transform dot child count, right? So I don't have to keep calling the function again and again, right? So there's that. So now if I press validate, it works fine. But of course if मैं यहाँ पे spacing डालता 20 का, it also adds spacing to the final output. ठीक है, not bad. 50 का spacing डालता हूँ, तो of course last में 50 का spacing भी add कर देगा, which is fine, right? So basically it works fine, right? Of course अपने को मेन पे स्पेसिंग नीचे एंड सब कंटेंट में मैं जो स्पेसिंग निकाल दूँगा, एवरीथिंग यू नो जस्ट फिट्स परफेक्टली. इफ उसके अंदर आई जस्ट ऐड अ थर्ड एक्सिस, लेट्स से z एक्सिस, which is rubbish, I know it doesn't make sense, but we are just testing the functionality of this group that we just made. See, perfectly बैठ गया. एंड यहाँ पे 10 का स्पेसिंग देता हूँ, उस स्पेसिंग के साथ उसको एडजस्ट करता है. बट ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पे रेडिकुलर स्पेसिंग दूंगा, लेट्स से नॉट सेंसिटिविटी पे, सब कंटेंट पे रेडिकुलर स्पेसिंग दूंगा, लेट्स से 50 का. सो बेसिकली वो क्या करेगा सेंसिटिविटी कि एक्स्ट्रा 50 का स्पेसिंग भी नीचे डालने का. अरे सब वी डोंट वांट कि फाइनलाइज्ड व्यू पे थोड़ा भी स्पेसिंग आए, राइट? सो उसके लिए वी कैन मे बी हैव बॉटम पैडिंग, बट द थिंग इज इट डज नॉट सीम टू वर्क, राइट? बिकॉज child का size we cannot, sorry, child का height we are not allowed to control in a vertical layout group, right? So ठीक है, it is what it is, right? So we can also say कि while multiplying we can say count -1, so that it doesn't consider all that extra after spacing, right? लाइक बॉटम पैडिंग कंसिडर नहीं करेगा वो. बट देर इज़ समथिंग वी कैन डू, इस बॉटम पैडिंग को हम लोग मैन्युअली यहाँ पे ऐड करके दे सकते हैं एक वेरिएबल पे, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो दैट्स दैट. सो फ्लेक्स से अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्पेसिंग ऑफ 60, विच इज़ अलॉट, बट इफ सेंसी पे जाता हूँ एंड वैलिडेट करता हूँ, यू कैन सी वो लास्ट एलिमेंट के साथ जाके चिपक गया, विच इज़ फाइन, which is exactly how it should work. But of course अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग देता हूँ 60 का, it still, oops, play mode पे जाके देना पड़ेगा, it still you know adjusts fine. So that is exactly what we want, and then we want something that you know helps differentiate between the two bottoms, right? Because ये ऐसा चिपक के नीचे अपने को, we do want some padding at the bottom, but of course that is still not possible because हम लोग इसके अंदर जो भी कंटेंट भर रहे हैं वो रेक्ट पे नहीं भर रहा है, राइट? सेंसिटिविटी के अंदर जो भी भर रहा है रेक्ट पे नहीं भर रहा है. बट लेट्स से इफ यू वर टू से चाइल्ड हाइट एंड सब कैलकुलेट होगा, आफ्टर दैट वी कैन सिंपली ऐड अवर बॉटम पैडिंग, विच इज़ ऑल्सो फाइन. बट ऑफ कोर्स वी देन ऑल्सो लूज द एबिलिटी टू वैलिडेट स्टफ, so that is not something that we should do, right? स्पेसिंग वगैरह बढ़ा देंगे तो इमेज इतना बंद हो जाएगा. देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस टू बी ऑनेस्ट. सो वी जस्ट नीड टू गेट रिड ऑफ इट. एंड यहाँ पे इनका हाइट एंड सेपरेटर इनके ओरिजिनल वैल्यूज़ पे लेके आता है, राइट? एंड बॉटम पैडिंग के लिए आई गेस आई जस्ट क्रिएट an extra variable, right, that says, oops, that says serialized field private float
right? Bottom, like padding, padding bottom. I cannot think of a name right now. I guess this is the stuff that I would ask ChatGPT to do for me, right? Variables का नाम वगैरह लिखना जो भी है. And before I set the height, right? या फिर I can also just say कि this should be then padding bottom, whatever, right? Instead of 0 से start करना ना उसको और incremental ऑपरेशन के थ्रू पास करना. सो इसका इनिशियल हाइट ही बॉटम पैडिंग रहेगा. सो लेट्स अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, आई कैन सी मेरे को लास्ट में और 10 का हाइट वगैरह जो भी मिल रहा है. सो दैट इज़ फाइन, राइट. एंड इसको भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखूँगा मैं, दैट इज़ 2f, राइट. एंड आई गेस आई रियली नीड सम गुड नेम्स for this members because padding bottom is very bad. Resolve content height does not look good to me, right? So ठीक है, नया नाम तो ऐड करना पड़ेगा. एंड टू बी ऑनेस्ट सब पे 10 का जा रहा है ना, लेफ्ट राइट वगैरह जो भी. सो यहाँ पे भी 10 का रखता है. मैं 0 का रखता तो कादा चिपक के बैठा था सब कुछ. सो ये 10 का दिख क्यों नहीं रहा? ओके, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ज़्यादा होता है. माई बैड. 2 कितना दिखता है? इतना दिखता है. आई गेस 5 इज़ फाइन, और 6 वट एवर लुक्स गुड टू यू. जो सही दिखता है उसके साथ जाओ, राइट. बाकी सब सही है. एंड वी कैन फाइनली ऑल्सो गेट रिड ऑफ दिस. ऑफकोर्स सेंसिटिविटी पे सब ऐड करना है, एंड अपना बॉटम पैडिंग यहाँ पे काम आएगा. एंड ऑल्सो सब कंटेंट का जो स्पेसिंग है या फिर जो टॉप है वो भी काम आएगा. लाइक इसको 0 कर दोगा तो सब भी चिपक के बैठ जाएगा, राइट. बट इसका अगर मैं टॉप 20 वगैरह जो भी करता हूँ देन इट वर्क्स फाइन. बट ऑफ कोर्स एक और मिस्टेक देख रहा हूँ मैं अपने कोड में कि इट इज़ नाउ नॉट कंसिडरिंग दिस इमेज का हाइट फॉर सम रीजंस. बिकॉज मैंने बोला चाइल्ड काउंट -1. राइट, इज दिस रियली रिक्वायर्ड? क्या दोनों को फिर चाइल्ड काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट? इफ लेट्स आई डोंट पुट आउट चाइल्ड काउंट -1, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 2 अलग अलग पैरामीटर्स भी लिखना पड़ेगा. एंड दिस एडजस्ट्स एवरीथिंग परफेक्टली. इट्स जस्ट दैट स्पेसिंग के टाइम बस स्पेसिंग नहीं कंसिडर करना चाहिए, बाकी सबका हाइट तो आना चाहिए, राइट. नाउ व्हाई इज इट कि जब स्पेसिंग ऐसा है चाइल्ड काउंट -1 और 90 का हाइट क्यों ले रहा है? वाई? क्लियरली ओह ये -10 पे इसके लिए. हाँ नहीं, -10 पे कुछ आ रही है बिकॉज इसका स्पेसिंग ओके ओके आई अंडरस्टैंड. इसका स्पेसिंग था 10 पे, बट सिंस चाइल्ड काउंट -1 जा रहा है सो वो खुद -1 पे चले जा रहा है. सो बेसिकली आई आल्सो वांट टू क्लैम्प दिस math.clamp, राइट, टू बिटवीन 0 राइट से लेके int डॉट मैक्स वैल्यू. अभी काउंट क्या है? काउंट एज एन इंटीजर, राइट. सो मेरा क्लैम्प फंक्शन इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है. नाइस. सो बेसिकली दिस इज सपोज टू बी वैल्यू. टू अवॉइड मोर कन्फ्यूजन, दिस इज सपोज टू बी मिन एंड दिस इज देन सपोज टू बी मैक्स, राइट. सो क्या वो 0 के नीचे नहीं जाएगा, दैट इज -1 पे नहीं जाना चाहिए. एंड इफ वी नाउ वैलिडेट इट वर्क्स फाइन, दैट इज -10 का हाइट पे नहीं जाएगा. अभी इवन तो इसका स्पेसिंग 10 है एंड सिंस इसके अंदर कुछ चाइल्ड नहीं है, मैंने चाइल्ड काउंट -1 लिखा था. सो क्या कर रहा था, -1 पे लेके जा रहा था. दैट इज उसका स्पेसिंग -10 जा रहा था, विच इज़ क्वाइट फनी. सो आई गेस सब बराबर है अभी. सो यहाँ पे नो मैटर मैं कितना स्पेसिंग डालो, इट्स नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब मेरा जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसको, राइट. ऑल्सो आई गेस अगर मैं इसका स्पेसिंग बढ़ा दूँ 20 का
ये भी स्पेसिंग डाल रहा है. Why is it adding spacing? 50. Okay, never mind. Validate. Okay. ओके हाँ, कंटेंट और इसके बीच में माय बैड बराबर बराबर है, बराबर है, सही है, नाइस. ओके सब सही है, बराबर है, दिस इज परफेक्ट. राइट, अभी नामकरण विधि, क्या नाम देगा इसको? एंड ऑल्सो इसका एक डिफ़ॉल्ट हाइट दिया है मैंने ऑलरेडी. ओके, वियर्ड लेबल निकल जाता है बिकॉज उसको मैंने, ओह ऐसा भी होता है. ऑलराइट, ठीक है, सब कुछ ऑलराइट. व्हाट डू वी नीड बट आई गेस मैं ब्रेक में सोच गया तो. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes.
thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi, I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly.
know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hi. I hope you're learning well. I'll be back in 5 minutes. Hey, thanks for being here. I'm excited to share my experience with you. Hey, thanks for still being here. I'm excited to share my experience with you. I'll be back shortly. I'm right along the way. I'm coming. Just wait. Hey, I know you're waiting. Just a few more minutes. I'll be back shortly. I know you're waiting. I'll be back shortly. Just a few more minutes. हेलो. सो आई गेस मैंने उसके लिए नाम डिसाइड कर लिया. ऑफ कोर्स, और मैं ब्रेक भी लिया मैंने. बॉटम पैडिंग एंड रिसाइज चिल्ड्रन हाइट. आई गेस दैट्स फाइन. ठीक है. अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ मेरे को जस्ट रियलाइज़ हुआ जैसे मैंने रिज्यूम बटन क्लिक किया वैसे. दैट इज़ हम लोग ने स्लाइडर टेक्स्ट पे जो ऑन वैल्यू चेंज का इवेंट जो बनाया उसको किधर इन्वोक तो किया ही नहीं है. Haha. So it's rendering useless. So basically we also want to change, or basically to be honest we want to call on value change when the slider value is changed, right? So yeah, so on value change dot invoke with the value that is float. Done. What do we do of that? Right, and also call this options instead of settings. It is technically settings, but reality देखा जाए तो अपने पास settings नाम का एक क्लास ऑलरेडी है. सो ऐसा ज़रूर नहीं कि गेम में सेटिंग्स नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू नो हैव अनवांटेड कन्फ्यूजन. लाइक सेटिंग्स स्क्रिप्ट में तो स्क्रिप्ट में रहने देता,
UI में या फिर इन गेम उसको ऑप्शन बुला सकते हैं. इट्स जस्ट गोइंग टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड कन्फ्यूजन. एंड यहाँ पे जो FPS है इसका प्रॉपर्टीज वगैरह निकाल दूंगा मैं. एंड आई विल स्विच दिस बैक into a U shot, right? That is fine. What do I want now? Right. हमने सेंसिटिविटी का एक ग्रुप बना के रखा हुआ है. आई जस्ट अप्लाई एवरीथिंग हियर एंड इफ आई गो टू UI अपने को यहाँ पे वगैरह जो भी है सब दिख रहा है, राइट. एंड टू बी ऑनेस्ट इसका स्क्रिप्ट कौन से नेम स्पेस में था कि RSUI menu and everything else, right? So basically UI के अंदर we create a folder called as menu, right? And उसके अंदर सब चीज़ें भर देता है so that our project is also a bit organized, right? Rendering में डाला URB data, all right? So ठीक है, ये सब भी सही है. इसके बाद what else do I want? ऑफकोर्स अपने को अभी के लिए ग्रुप का कुछ ज़रूरत नहीं है, बट अपना ग्रुप रेडी है. इट्स गुड टू गो. सो मैं इसको इधर से निकाल दूंगा, राइट. नाउ आई जस्ट वांट कि FPS में कुछ भी चेंजेस हो वो एक्चुअली मेरे FPS पे रिफ्लेक्ट हो. दैट इज़ मेरा FPS कैप चलना चाहिए आउट ऑफ द गेम और एनीवेयर. बेसिकली ये वर्टिकल लेआउट ग्रुप पे है. सो ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है? वाई एम आई अलाउड टू चेंज दिस? व्हाट? ओके, weird bug. Alright, weird bug. Change करने दे रहा था, right? So of course I also want to check कि सब पे सब सही दिख रहा है ना. Even on free aspect everything wants or needs to look fine. It does. सब बराबर आ रहा है. Nice. सही है. अभी इसके बाद अपना स्क्रिप्ट्स पे जाते हैं हम लोग. एंड सेटिंग्स करके जो स्क्रिप्ट है दैट शुड बी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फोल्डर. ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ऑब्जेक्ट. settings is an object technically. Basically every class is an object, but we're talking about scriptable objects here. So अपना मेन के अंदर है ऑब्जेक्ट्स करके एक फोल्डर है जिसके अंदर सारे स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट रखे हुए. सो व्हाई नॉट जस्ट कॉल इट स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स. स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट instances, right? Better name. We have an editor folder and we have a scripts folder, right? Right, great. Scripts के अंदर we have object करके folder जहाँ पे we can have scriptable object or non-scriptable objects, which is fine. And UI के अंदर I am going to create another folder called as हाँ मेन्यू करके फोल्डर बना सकता, बट आई गेस सभी के लिए उसको इग्नोर करेगा बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. आई गेस आई जस्ट क्रिएट ऑप्शंस जैसे कि मेन्यू ऑप्शंस. आई गेस जस्ट ऑप्शंस व्हाटएवर. सो दिस वुड गो अंडर अ नेम स्पेस दैट इज दिस, right? Now I am totally winging everything. I have not decided anything right now. So if I make something in the next session, I might regret it or I might realize that it is bad for practice. So I'll be deleting and creating a lot of stuff because nothing is pre-planned and everything is just चलो देख लेते हैं वैसा वाला, right? So it is what it is. So ठीक है, अभी ऑप्शंस के अंदर I want to have a reference to settings. That is going to say m_settings, right? ठीक है, बाकी सब इज फाइन. इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं, m_underscore लिखने का ज़रूरत नहीं बिकॉज आई हैव नॉट फॉलोड दैट नेमिंग कन्वेंशन एनीवेयर. हाँ ठीक है, इधर किधर भी फॉलो नहीं किया मैंने. ऑलराइट, बराबर.
इवन ग्रुप पे भी फॉलो नहीं किया मैंने। एंड यहाँ पे भी स्टार्ट फंक्शन वगैरह रिसर्च वगैरह जो भी अलग है। एंड पूरे गेम में इतने स्क्रिप्ट्स राइट। यप एंकर डिबगर वगैरह जो है ये दूसरे है बट ऑलराइट। और ये क्या था, सॉरी, स्क्रिप्ट्स के अंदर ओके इन पैकेजेस इन दिस एंड स्क्रिप्ट्स। इसका होवरिंग थोड़ा राउंड हो गया बट ठीक है, व्हाटएवर, डजंट मैटर। आई गेस मैंने फिक्स करा नहीं क्या था। I am not lost, I'm just thinking about a lot of stuff right now, right? I am not trying to waste time or anything. There's just a lot on my mind right now, to be honest. Like project related only. लाइक प्रोजेक्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ लाइक किस सर से क्या उठा सकता हूँ, सेटिंग्स का रेफरेंस किस तरीके से लेना बेस्ट रहेगा एंड एवरीथिंग एल्स। सो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह लिया हुआ है। आई जस्ट वांट टू नॉट have this settings being referenced at many places, but this is our sole settings that shouldn't be deleted, and basically this is the object that should contain most of the stuff, right? अभी इसके अंदर मेरे पास fps करके एक वेरिएबल है, दैट इज़ फाइन, सो आई डू लाइक दैट। अभी उसके बाद आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन public void set target fps, right? Now this int takes float value. Why? Because हम लोग floating points पे स्लाइडर पे हम लोगों ने जो डेलीगेट बनाया था वो फ्लोटिंग पॉइंट्स लेता है, जो भी है वो सिंगल लेता है बेसिकली। सो द डेलीगेट सिग्नेचर इज वन फ्लोट, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इंटेक फ्लोट एज अ पैरामीटर। दैट इज द ओनली वे इफ यू वांट टू बाइंड इट डायनामिकली। डायनामिक बाइंड नहीं करना देन वी कैन डू वट एवर वी वांट, बट ठीक है। इसके अंदर आई जस्ट से सेटिंग स्टार्ट fps equals to value as u short, right? And after that I also want to say application dot target frame rate will be equals to basically this, right? So that's great. So if I now press play and मैं अगर यहाँ पे fps का वैल्यू चेंज करता हूँ, you will see कि वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। ओके हाँ, बिकॉज मैंने वो बाइंड ही नहीं किया, माय बैड। हाँ, आई ऐड वन हियर पॉपअप ऑप्शंस के साथ। आई जस्ट सेट fps एंड ठीक है, यप दिस वर्क्स फाइन नाउ, राइट? मैक्स fps वगैरह जो भी सेट होता है, बट इट्स जस्ट दैट कि व्हेनेवर आई प्रेस प्ले बैक अगेन इट डजंट कम बैक। सो आई वुड वांट अ फंक्शन दैट रीसेट्स स्टफ। ऑफकोर्स मैंने आई गेस ये पहले 3-4 बार बता दिया होगा, बट एवरी टाइम आई ट्राई टू शो इट, आई डू इट इन अ बेटर वे, राइट? नाउ आई एम नॉट श्योर इफ सेट टारगेट fps का फंक्शन ऑप्शंस के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, राइट? लाइक आई कैन जस्ट क्रिएट अ फंक्शन राइट नाउ दैट्स गोइंग टू से इनिशियलाइज fps स्लाइडर, राइट? अब इसका काम क्या होगा कि जो भी अपना स्लाइडर का वैल्यू है दैट इज स्लाइडर which is a part of the using unity engine dot ui namespace, right? अभी मेरे को इससे याद आया कि हम लोगों ने ग्रुप पे भी कुछ ui वगैरह कुछ डाला था, ऑलराइट, ठीक है। विच इज़ पार्ट ऑफ द ui namespace। उसके अंदर मेरे को डालना है कि स्लाइडर dot value will be equals to settings dot fps, right? So that's that. अभी where do I call this function, right? अभी इसको कॉल करने के लिए I do require
समथिंग एट स्टार्ट. बेसिकली ऑन इनिशियलाइज करके एक मेरे को ऐसा कुछ इवेंट चाहिए वेर आई कैन सब्सक्राइब मल्टीपल मेम्बर्स, एंड मेरे को स्लाइडर का रेफरेंस लिए बिना उस स्लाइडर को इनिशियलाइज कर सकता हूँ. ऑफकोर्स इफ़ आई वांट टू इनिशियलाइज दिस स्पेसिफिक स्लाइडर, राइट, लाइक इसका वैल्यू स्टार्टिंग में रिवाइव होना चाहिए, देन ऑफकोर्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा. बट विदाउट रेफरेंस दिस इज़ द वे आई एम गोइंग राइट नाउ. एंड आई गेस मैं आज का पूरा रिमेनिंग लेक्चर सिर्फ इसका एथिकल वे फिगर आउट करने में लगा होगा, राइट, लाइक कौन से तरीके से ज़्यादा रीडेबल है, ज़्यादा मेंटेनेबल है, राइट. The way that suits me the best, I'll try to figure it out in the remaining of the time. So I'll call this on initialize event, and I'll just say this should be called on the start function, right? Yeah, not even on the start function, basically on enable. So basically on initialize dot invoke is what we'll do, right? After that, so after that I guess I'll just say drag and drop this right here, and initialize FPS slider, but FPS slider कहाँ पे, यहाँ पे. So when I press play it goes back to 275, I get it to 66, I press play, it comes back to 66. Now is there a better way to do this? Because from my point of view right now it feels like I am trying to force it into serialization right here. Like pop-up option से अगर मेरे को कुछ लेना है, then I should be able to bind it within the script itself, right? Now it does require some manual work and creating manual events, yeah, manual serialized events वगैरह जो भी बनाना पड़ेगा extra, but that is a little bit too much. Of course, serialized events will only support up to one single parameter, right? If we try to create a dual parameter ka unity event, it's just not going to work, right? So let's say if I just try to say public class custom event that derives from unity event, right? Now let's say type settings and t, right? Now let's say custom type t जो जाएगा इधर, right? Anything, t can be anything, whatever. And if we make this class serializable, right? So basically यहाँ पे unity event के जो भी functionality से आ जाने चाहिए. So if we are now able to find this custom event t on initialize, and यहाँ पे I just say nothing basically, right? या फिर nothing के बदले I guess 80 चल लेता, right? Now it just creates a custom event with dual signature. So as you can see it यहाँ पे settings और integer का एक extra event बनता है, which is fine. But still if I were to drag and drop stuff वो usually काम नहीं करेगा. So ठीक है, like जो value pass करना है मेरे को, whatever value I want to pass on, right, it's always going to show up only one specific value as a serialized changeable property right here. Like इसका जो value parameter है वो हमेशा एक ही दिखेगा. It's not going to show up multiple parameters. So that is a bummer, right? So we have to work around that. We can also have a unity event with settings on it if we want, right? That also passes the settings. So basically इसको जब invoke करेंगे on initialize, it does pass us this setting so that other classes can subscribe to it, right? इसका यहाँ पे अपने को signature दिख रहा है on initialize, that requires settings. That's fine, that's great actually. So if we were to create scripts
लाइक FPS पे जाके अपना खुद का स्क्रिप्ट लगाएंगे जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग FPS, मास्टर वॉल्यूम पे जाके एक स्क्रिप्ट लगाएंगे दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग और बेसिकली हैंडलिंग द मास्टर वॉल्यूम, दैट वुड बी नॉट बैड एज वेल, राइट। सो ठीक है, मास्टर वॉल्यूम पे जो भी चेंजेस क्या सबको अप्लाई करता हूँ, सेटिंग्स पे जो भी चेंजेस क्या सबको अप्लाई करता हूँ मैं, राइट। नाउ आई जस्ट गो टू स्क्रिप्ट्स UI and यहाँ पे I'll finally create a folder called as menu, right, जिसके अंदर I'll add content, group and options. अभी options के अंदर जो है बराबर है, I'll just add one more folder in here called as content. I guess वो ज़्यादा सेंस से बना था बट ठीक है। लाइक ओके ठीक है, मेरे को पता नहीं हायरार्की क्या होना चाहिए, बाद में सोचूंगा उसके बारे में। अभी के लिए आई जस्ट क्रिएट एन FPS कंटेंट का एक स्क्रिप्ट। सो दिस शुड बी अंडर द नेम स्पेस rs.ui.menu.content टू बी ऑनेस्ट, बट कंटेंट करके ऑलरेडी एक क्लास अवेलेबल है, राइट। सो दैट मेक्स लेस सेंस टू ऐड कंटेंट इन दर, राइट। सो ठीक है, अभी के लिए इसको इतना रखते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं कौन से फोल्डर में आना चाहिए, क्या आना स्पेस पे आना चाहिए। आई डेफिनेटली डू इन ऑन स्ट्रीम बिकॉज वहाँ पे टाइम मिलता है साइड, एंड आई गेस मैं यहाँ पे उसके सारे फंक्शन जो भी ऑप्शंस पे लिखे थे यहाँ पे भर के रखूँगा। सो मेरा ऑप्शंस भी खाली रहेगा एंड हर एक फंक्शनलिटी का अपना अपना स्क्रिप्ट रहेगा विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। एंड ठीक है, हर एक ग्रुप का भी अपना रह सकता है, हर एक इंडिविजुअल कंटेंट का अपना रह सकता है, नॉट बैड, इट इज़ व्हाट इट इज़। बट आई वुड रिक्वायर वन थिंग इज़ दैट मेरे को स्लाइडर का रेफरेंस लेना पड़ेगा इफ़ आई वर्किंग विद दिस FPS, विच इज़ फाइन। आई विल गेट स्लाइडर, राइट, स्लाइडर, दिस इज़ फाइन। इसलिए इतना चाहिए रहेगा नो मैटर व्हाट, राइट। देन आई कैन हैव public void initialize, right, that intakes settings initialize के बाद आई जस्ट से कि ये क्या करेगा, इनिशियलाइज स्लाइडर का वैल्यू विल बी सेट टू settings dot FPS, that's it, that's the initialization part, right। so ठीक है, ये फटाक से हो गया इधर का। एंड देन public void execute, right। अभी एग्जीक्यूशन में वो क्या सिग्नेचर लेना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एवरी सिंगल टाइम, राइट। सो अभी के लिए लेट्स से ये ले रहा है फ्लोट वैल्यू, एंड यहाँ पे वी वांट application dot target frame rate go to settings as well, to be honest, right। application dot target frame rate should then have a u-shot value, that is इसका FPS set हो जाएगा। the thing is it's not going to update on settings, which means यहाँ पे मेरे को settings से कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, right। so basically for whenever any of the GUI element updates, I also want to run an update function, right, not a typical update, but it's just that कि अगर कुछ भी चेंज होता है, जैसे कि FPS का चेंज होता है, मास्टर वॉल्यूम में कुछ भी वैल्यू चेंज होता है, एनीथिंग इज वैलिडेटेड, देन आई ऑल्सो वांट ऑप्शंस टू हैव दैट कंट्रोल, बिकॉज अभी यहाँ पे मेरे को सेटिंग्स का रेफरेंस कुछ भी करके लेना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन, राइट। आई कैन नॉट जस्ट गेट सेटिंग्स फ्रॉम हियर। सो हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, इनिशियलाइज करने के टाइम जो सेटिंग्स अपने को मिल रहा है, राइट, इनिशियलाइज करने के टाइम जो सेटिंग्स अपने को मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज प्राइवेट सेटिंग्स
again, and then we can just say this will be equals to settings, but of course this start settings, right? Of course this looks bad, इसको fix करना है, definitely करना है, why not? Alright, so that is kind of done. Also you know कि इसको कुछ नहीं बराबर है यूज शॉट में, that's fine, यूज शॉट is fine. So एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सही है, नाइस, नॉट बैड एट ऑल. नाउ वी जस्ट वांट कि पॉपअप में से सारी चीज़ें निकल जाए, एंड दिस इज बेसिकली द एंटायर कोड बेस ऑफ ऑप्शंस. इट इज़ जस्ट सपोज टू होल्ड, or basically it is supposed to broadcast settings, right? Of course this event should be public and settings का reference भी यहाँ पे बराबर आना चाहिए, and I guess इसको मैं नाम दूंगा m_settings because I have changed my mind again, which happens a lot to any developer, right? So ठीक है. And ठीक है, I'll also create the headers such as references and events का जो I guess मैंने लिखा था slider text पे, वो headers you know they make the inspector look good and I want that here. पूरा वापस से लिखने से अच्छा एक एक करके लिख देता हूँ, एंड देन इसका स्पेसिंग भी चाहिए, राइट? अभी स्पेसिंग को मैं इवेंट्स के साथ ही लिख सकता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट? सो अलग से लिखना या साथ में लिखना, इट्स टोटली अप टू प्रेफरेंसेस, राइट? वट एवर लुक्स गुड. अभी हेडर स्टैंड अलोन है, लाइक सिर्फ हेडर्स लिखता था, आई गेस दिस टू मी लुक्स बेटर. सो ठीक है, क्लास भी थोड़ा सा स्टैक दिख रहा, विच इज़ फाइन, बट नॉट टू स्टैक. इट इज़ वेरी इजी टू रीड एवरीथिंग, एंड ये भी अपना इंस्पेक्टर भी काफ़ी सही दिख रहा है अभी, right, which is exactly what you want. And on initialize के ऊपर I'll just drag and drop FPS and वो लोग content. Okay, FPS तो मैंने स्क्रिप्ट अटैच नहीं किया, I guess FPS, right? अभी ये स्लाइडर पे आएगा, ये वाला स्लाइडर, एंड ये फिट हो जाएगा FPS के प्रीफैब वेरिएंट पे, राइट? एंड देन वी कैन जस्ट से कि पॉपअप ऑप्शंस का ऑन इनिशियलाइज में अगेन FPS के ऊपर जो इनिशियलाइज का फंक्शन था वो सेट हो जाएगा यहाँ पे. सो बेसिकली एवरीथिंग विल बी इनिशियलाइज्ड परफेक्टली, एंड एग्जीक्यूशन पे स्लाइडर टेक्स्ट पे सब डालना, राइट? दैट इज वी डू गेट ओके स्लाइडर टेक्स्ट. ओके, अलग अलग चीज़ है. येस, आई वाज ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड ऑल ऑफ दैट. एंड क्या किया मैंने अभी, जस्ट कंटेंट डाला मैंने, वाई, एंड यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट, राइट? सो ठीक है, वी आर नाउ ऑल्सो एबल टू अपडेट अवर सेटिंग्स नॉट ओनली हियर बट इन द इंस्पेक्टर एज वेल. लाइक लेट्स से मैं 256 FPS पे एंड मैंने कम कर दिया. You can clearly see I am now limited to 8 FPS. लाइक जो मैंने वैल्यू लिखा 1 FPS का, थोड़ा बड़ा था वो 25 हो गया, राइट? ऑफकोर्स कम FPS पे बड़ा होगा तो वो लैग ही काम करेगा, बट एज यू कैन सी 73 पे कैप हो गया, राइट? सो माई FPS कैप इज़ नाउ वर्किंग, right? Because I am also setting the target FPS, and for some reason I am feeling very tempted to create a base class for this behavior, जहाँ पे इनिशियलाइज करके फंक्शन हमेशा रहेगा दैट उस जिसका सिग्नेचर फिक्स्ड रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली. सो ठीक है, नाउ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दिस लुक्स गुड टू मी. It works well. There is still a little bit of cleaning to be done, especially in this class and for that class. But उसके पहले I guess I'll just try to create a hierarchy over here, because what the hell is this?
राइट. एंड कंटेंट क्लास के लिए कुछ अलग नाम सोचना पड़ेगा. लाइक कंटेंट का क्या नाम देंगे? What are synonyms for content? I'll just Google it right here on my other monitor. Synonyms for content. That is not good. Content set. Okay, not that. As a noun, no. No, it keeps saying stuff like a piece वगैरह जो भी हो. Then what do we name face के categories को? Like this, इसको एक नेमस्पेस में डालना है, डेफिनेटली डालना है. बिकॉज फेस के अलावा और बहुत कुछ आएगा, जैसे कि मास्टर वॉल्यूम का अपना लॉजिक आएगा, रेजोल्यूशन का अपना लॉजिक आएगा, सारी चीज़ का अपना अपना लॉजिक आएगा. वी डेफिनेटली वांट वन मोर नेम स्पेस लेवल इन हियर, राइट. अभी उसके पहले मैं जितने भी स्क्रिप्ट है सारे एक साथ खोल के रखता हूँ, जो जस्ट इंस्पेक्ट एवरीथिंग जो भी UI रिलेटेड है, बिकॉज इट्स डेफिनेटली मेन्यू ऑप्शंस, मेन्यू कंटेंट एंड मेन्यू ग्रुप. ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ऑप्शन नाम भी ऑलरेडी टेकन है. दैट इज इसको क्या मैं पॉपअप नाम दे दूँ, ऑप्शंस को पॉपअप दे दूँ. पॉपअप, इसको पॉपअप ही नाम देना पड़ेगा, राइट. यस, इसको पॉपअप नाम देना पड़ेगा. So ठीक है, still a bit dicey name, right. So I just bookmark this line, right. इधर से bookmark कर दिया मैंने इसको, या फिर bookmark नहीं भी करेगा तो भी चलेगा. I just say कि reconsider name, right. I'll write that. But pop-up के बाद we are open up to the name that is options. Every class, I believe, should have one word identifiers. Not necessarily, but in this case, it's going to be, I guess, much more maintainable and much more clean. Right? So content menu options, option.fps. Yeah, option. Great. Not plural, singular. Right? So we are into menu options, for which we then create a folder called as option, जिसके अंदर जाएगा फेस एंड बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मास्टर वॉल्यूम का स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग एल्स. बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे भरेंगे. UI में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट. किसी भी गेम के वो सब हर एक चीज़ भरना है अपने को, हर एक चीज़ को फंक्शनल भी बनाना, राइट. स्लाइडर टेक्स्ट आ गया अपना, UI का पार्ट आ गया. UI के अंदर मेन्यू, मेन्यू के अंदर कंटेंट, ग्रुप, पॉपअप. आई गेस पॉपअप शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द मेन्यू. पॉपअप इज ए UI मेन्यू, वट एवर, राइट. सो मेन्यू मेन्यू मेन्यू. नेम्स के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है. डेफिनेटली आई इंटेंड टू फिक्स इट. व्हाई इज इट कॉल्ड मेन्यू नाउ? It makes less and less sense every time I try to think about it, right. So whatever. ठीक है. अभी उसके बाद जो मैं बता रहा था कि हर एक ऑप्शन का एक बेस क्लास होना चाहिए, राइट. सो आई जस्ट क्रिएट अ स्क्रिप्ट हियर दैट्स कॉल्ड एज बेस, राइट. सो लेट्स ऑल्सो पुट इट इनसाइड ऑफ, ये सब बंद कर दे अभी के लिए.
is let's also put it inside of the same namespace जो हम लोग बाद में definitely change करेंगे because I want to start this project on the right note or on the right foot, and everything works great if you have a great UI. That's what Einstein said, I guess. Whatever. So this is going to be an abstract class, right? And of course to be honest, I don't think I require option because I'll call this class as option. Yes, again and again and again. And option के अंदर there is going to be a public abstract void initialize that intakes settings, right? So when this derives from option, we already have initialize, implement abstract class that needs to be overridden, right? So I do all of this over there, and voila, I have an initialize function, right? इसके बाद I also want कि इसका awake function no abstract function में settings हमेशा store हो जाना चाहिए, to be honest, right? So I'll just say protected settings, right? And to be honest, इसको abstract के बदले I'll just make it virtual maybe, right? I'll just say this dot settings will be equal to settings, which is great. ये होगा मेरा option, and since यहाँ पे override हो गया, that's fine. So basically I don't need to do extra stuff. I can just say base dot initialize with this settings as well. Right. या फिर basically इस settings को मैं किधर छुपा के भी रख सकता हूँ, to be honest. Can I do that? Am I... No, I cannot do that. ठीक है, this is fine. because ये किधर ना किधर बाइंड करना पड़ेगा, right? And then there is also public abstract void on execute, but of course execute पे it isn't decided कि इसका parameter क्या रहेगा, which means I'll intake t, right? And there will always be a parameter of type t that is called a value, right? So basically if I want to do something, right, I'll call this, and of course I can just bind this right here. I'll assume that t is float, but of course इसको मैं declaration के time पे I cannot just pass float or whatever. So basically इसका type क्या होगा ये मेरे को option में से उठाना पड़ेगा, which means that generic type cannot go here. या फिर I can also just be someone that just doesn't need to call the execute, it just doesn't need to make an abstract on execute का function, right? But let's say if मैं t यहाँ पे pass करता, let me just explore all of my possibilities, right? I pass t right here. I then call options, and then I want to say FPS का type क्या? What is the type of FPS? I say integer, but to be honest ये integer का type नहीं है. This is of type float, right? So basically अभी क्या आएगा, क्यों हम लोग को जो स्लाइडर पे बाइंड कर रहे हैं उसका टाइप फ्लोट है, राइट? सिग्नेचर का टाइप. So when I implement the abstract class, it then gives me a float, which is then
converted to this. So basically I can have any one type in here, right? I can call the option with float, I can call the option with another type or whatever, right? And t can literally be anything, right? I always have to match it with जो भी इवेंट पे बाइंड कर रहा है उसका सिग्नेचर. सो आई गेस दैट्स ऑल राइट. इट्स जस्ट दैट कि एक ऑन एग्जीक्यूट का फंक्शन आ जाता है सो दैट वी आर एबल टू बाइंड बोथ ऑफ देम. सो ये दो फंक्शंस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे. दैट इज़ द गारंटी दैट वी हैव. श्योर थोड़ा डिफिनेशन देना पड़ेगा कि फ्लोट का होगा वगैरह जो भी है, बट दैट्स फाइन आई गेस. राइट, ठीक है. दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ ग्रेट. एंड व्हाट डू वी डू देन? पॉपअप्स पे जाता हूँ, मेरा इनिशियलाइज फंक्शन है. इफ़ आई गो टू साइड टेक्स्ट, मेरा ऑफकोर्स ऑन एग्जीक्यूट करके फंक्शन आएगा अभी. दैट इज़ ऑन एग्जीक्यूट, बराबर है, जो फ्लोट पे बाइंड हो जाएगा, राइट? बिकॉज मैंने टाइप पास किया है टी फ्लोट. अभी और क्या चाहिए मेरे को? व्हाट एल्स डू आई नीड? या इट वुड बी ग्रेट अगर इनिशियलाइज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा पॉपअप पे जाके. लाइक मेरे को हर बार उसको जाके सेट नहीं करना पड़ेगा, वट एवर. बट दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट टू आस्क. एंड कुछ मेहनत नहीं लगेगा यहाँ पे हर एक चीज़ इनिशियलाइज करने को एक एक करके. लाइक हर एक पे जाकर मेरे को खाली इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल करना. दैट्स इट. हाउ हार्ड कैन इट बी, राइट? बट इसको ऑटोमेट करना क्या सेन है? शुड आई ऑटोमेट इट? लेट मी आस्क माई सेल्फ दैट. लाइक ऑटोमेट करने का रास्ता भी क्या है मेरे पास? मेरे को फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करना पड़ेगा पॉपअप, विच इज़ बैड. आई डोंट वांट टू फाइंड ऑब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू टेक डायरेक्ट रेफरेंसेस. अगर मैं डायरेक्ट रेफरेंसेस ले रहा हूँ देन व्हाई डोंट आई जस्ट गेट अ डायरेक्ट रेफरेंस फॉर सेटिंग्स फ्रॉम पॉपअप ऑब्वियसली. सो पॉपअप में से मेरे को सेटिंग्स मिल जाएगा, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट, नॉट बैड एट ऑल. एंड I think I have an idea. Let me just say कि मैं रेफरेंस ले रहा हूँ किसका? पॉपअप का, राइट? पॉपअप. एंड आई जस्ट से रीसेट पे, राइट, कि पॉपअप विल बी इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट इन पेरेंट पॉपअप. So whatever options I put out, they will always have this pop-up, and if I reset it, वो automatically ऊपर से उसको उठा लेगा. So that is not bad at all, right? And I don't have to bind each and every initialize function manually, right? I don't have to do this manually. If I want additional initialization, that can be done, that can be arranged. And now I just have this thing, which is great. अभी इसके बाद what I can do is I can then say on enable popup dot on initialize dot add listener initialize, right? And I can say on disable remove listener initialize, right? Now this is going to be call, right? And do I really need settings? Because since मेरे पास पॉपअप का रेफरेंस है, उसके अंदर जो सेटिंग्स पड़े हुए हैं उसको मैं वापस से सेटिंग्स कर दूँगा. बिकॉज अभी वाई मैंने नाम वापस चेंज किया, बिकॉज मैं उसको इधर से निकाल रहा हूँ. हाँ, राइट. एंड इसके अंदर जो सेटिंग्स है इसको मैं बना रहा हूँ पब्लिक, और पब्लिक बनाने पे इसका एस कैपिटल करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास पास्कल केस. व्हाई नॉट, राइट? दैट इज़ फाइन, दैट्स फाइन, नॉट बैड. एंड यहाँ पे आई जस्ट हैव अ प्रॉपर्टी दैट जस्ट सेज प्रोटेक्टेड settings, right? Again, settings
that is going to give me pop-up dot settings. Right, that makes a lot of sense to me. And to be honest, इसका ये भी what the hell ये भी abstract हो गया अभी, right? So it doesn't have to call the base classes or whatever in the options area. It can just be like this. Initialize पे क्या होना चाहिए? I just define that. Execute पे क्या होना चाहिए? I can just define that. कौन सा content है slider है? Boom, right? So basically and wait a minute, just wait a minute. Oh, कितना आवाज कर ले लो. Alright. Where was I? हाँ, सो अपने को बस देखना है एक सिंगल ऑप्शन में और क्या क्या भरना है फेस में. लाइक रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ भरना है. मास्टर वॉल्यूम में मास्टर वॉल्यूम रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ भरनी पड़ेगी. दैट इज़ फाइन. हर एक का अपना अपना क्लास हम लोग लिख सकते हैं. हर एक पे अपना अपना इनिशियलाइज के अंदर कंटेंट लिख सकते हैं या ऑन एग्जीक्यूट के अंदर अपना अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट. सब बराबर है, सब काम करता है. बाय बाय, राइट. सो वन मोर थिंग, वी ऑल्सो डोंट रियली वॉन्ट कि इनिशियलाइज अभी सेटिंग्स पास करेगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वी ऑलरेडी हैव सेटिंग्स. इट शुड जस्ट बेसिकली ऑन इनिशियलाइज इन वर्क. दैट्स डन, राइट. डन. और नहीं, डन, ठीक है. नहीं रहेगा तो भी चलेगा, रहेगा तो भी चलेगा, दोनों भी अच्छी बात है. हाँ, यहाँ पे टी वैल्यू आएगा. अच्छा, यहाँ पे सेटिंग्स नहीं डाल सकता ना मैं, बराबर है. लेट मी थिंक कि मैं यहाँ पे सेटिंग डाल पाऊँगा कि ऑन एग्जीक्यूट में सेटिंग्स का रेफरेंस नहीं ले पाऊँगा ना पैरामीटर के थ्रू. ऑन एग्जीक्यूट में वन पैरामीटर इज़ ओनली रिक्वायर्ड. वन पैरामीटर का लिमिट अपने पास, बिकॉज यू वांट टू बी एबल टू बाइंड इट in a serialized view in different objects, which is the most convenient way of doing it. So वहाँ पे मैं सेटिंग्स नहीं लगा पाऊँगा. जो भी सेटिंग्स लगाना मेरे को खाली इनिशियलाइज में जगह है. एंड इफ़ पैरामेट्रिक जगह नहीं है देन उसको ऑन इनिशियलाइज में इन्वोक करके कॉल करना यूजर से, बिकॉज हम लोग को इसका डायरेक्ट रेफरेंस मिल रहा है अभी. सो दिस इज़ बेटर. एंड मैं जो सोच रहा था, अगर सेटिंग्स का रेफरेंस ना आता है, जो भी है हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स पे पास कर रहे थे, क्या अनएग्जीक्यूट पैरामीटर्स में देखा वगैरह जो भी है, देन ऑल्सो दैट वुड बी काइंड ऑफ ग्रेट. लाइक यहाँ से अपने को सेटिंग्स मिल जाएगा, बट नहीं मिलने वाला वो चीज़. सो नेवर माइंड, ये जो है बराबर है अभी के लिए, राइट. इट मे बी कैन नॉट गेट बेटर देन दिस, मे बी, राइट. एंड ऑल्सो मेक इट प्राइवेट प्रोटेक्टेड, बिकॉज थोड़ा लंबा कर देता, व्हाई नॉट. Right, so we do have pop-up, we have reset function, on enable, on disable, and then we have two abstract functions, that is on initialize and on execute, that takes a generic type t, a template basically. अभी इतना करने के बाद अपना बेस ऑप्शन रेडी हो गया, राइट. बेस ऑप्शन रेडी होने के बाद अपना हर एक ऑप्शन पे अपन जो भी है आराम से सब लिख सकते हैं. दैट इज़ गुड. नाउ आई डू वांट टू रिकन्सिडर दिस नेम बिकॉज पॉपअप इसका नाम ठीक है. एंड आई ऑल्सो से, आई ऑल्सो राइट रिकन्सिडर मेन्यू, राइट. बिकॉज आई गेस मेरे लाइव का टाइम होने आया, 7 मिनट्स रिमेनिंग. आई गेस 7 मिनट्स तक थोड़ा सोच लेता, अगर नाम आ गया देन कमेंट हटा देगा, और 7 मिनट में मैं और क्या ही बताऊँगा, राइट. ऑफकोर्स यहाँ पे सेटिंग्स का रेफरेंस निकल गया रहेगा. एंड नाइस, FPS पे FPS आ रहा है, सही है ये चीज़. इसका स्लाइडर वगैरह जो भी डालना है अपने को, इसको ओवरराइड करके रखना है. एंड आई होप उसके अंदर के रेफरेंसेस पहले जैसे वापस से किधर से निकल नहीं गया, जो एक बार हो गया था, राइट. सारे के सारे रेफरेंसेस है, कुछ बिगड़ा नहीं है आई गेस. एंड यार इट वर्क्स फाइन. ये क्या बता रहा है मेरे को, छोटी सी चीज़.
अच्छा ऑफकोर्स ये पॉपअप का वैल्यू जाएगा नहीं ना ऊपर, नहीं जाएगा। इफ़ हम लोग ने कोई गलत पॉपअप उठा लिया तो राइट, सो रीसेट पे इफ़ नॉट पॉपअप बिली कंडीशन डाल के रखते हैं, सो दैट वी ऑलवेज इंश्योर कि करेक्ट पॉपअप जा रहा है अपने पास, राइट। बाकी आई गेस सब अच्छा दिख रहा है, कोड अच्छा दिख रहा है, कोड काम भी अच्छा कर रहा है, इट लुक्स क्लीन, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी इसके बाद मेरे को बस एक रिग्रेट है ये सब नेमिंग्स का। आई रियली वॉन्ट टू थिंक ऑफ अ बेटर नेम सो दैट नेक्स्ट टाइम मेरे को कन्फ्यूजन बहुत कम हो नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट द लाइव स्ट्रीम, राइट, बिकॉज एवरी लाइव स्ट्रीम के स्टार्ट में आई जस्ट थिंक व्हाट द हेल डिड आई डू हियर प्रीवियसली, लाइक क्या सोच के मैं क्या कर रहा था। कंटेंट मेन्यू वगैरह इसमें इसमें मेन्यू डाला हुआ ना अभी तक, मेन्यू आई गेस निकाल देना ना। इन जीरो में राइट, इसके अंदर हम लोगों ने जो फोल्डर्स रखे हैं दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट राइट, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे अपना खुद का फोल्डर बना के रखा है सब कुछ अच्छे से। सो वेन एवर यू वांट टू फिल्टर स्क्रिप्ट्स यू कैन देन यू नो से कौन से फोल्डर में क्या एसेट्स में, श्योर एसेट्स में सब अपने पास है, बट हम लोग करेंटली एसेट्स में नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू द मेन फोल्डर एंड यहाँ से आई देन चेक फॉर स्क्रिप्ट्स, तो आई डिड नाउ चेक फॉर स्क्रिप्ट्स इन जीरो दिस मेन फोल्डर। सो चलेगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं, हम लोग स्क्रिप्ट्स में जाके भी अलग से चेक कर सकते हैं, राइट। लाइक स्क्रिप्ट पे जाते हैं एंड वी सी स्क्रिप्ट्स में और क्या क्या पड़ा हुआ है, नाइस। सो कंटेंट के इसके अंदर स्लाइडर टेक्स्ट इसके अंदर आता है, स्लाइडर टेक्स्ट आता है यूआई के अंदर विच इज़ परफेक्ट, राइट। यूआई सेटिंग्स आता है आरएस के अंदर बराबर है, पूरे एप्लीकेशन के अंदर आना चाहिए। पॉपअप आता है यूआई के अंदर, सही है। ऑप्शन आता है यूआई मेन्यू के अंदर, ग्रुप आता है यूआई मेन्यू ग्रुप, स्पेस आता है मेन्यू के अंदर, मेन्यू एंड कंटेंट आता है मेन्यू के अंदर। आई जस्ट रियलाइज्ड वन मोर थिंग कि हम लोग ऑप्शन को एंड कंटेंट को मर्ज कर सकते हैं, राइट। वी कैन डेफिनेटली मर्ज ऑप्शन एंड कंटेंट बिकॉज दे आर बेसिकली और एसेंशियली द सेम थिंग, राइट। इज दैट पॉसिबल? एंड ऑफ कोर्स फिर ग्रुप चलना बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रुप डायरेक्टली कंटेंट पे चलता है। सो ऑफ कोर्स हाँ ये भी सोचना पड़ेगा ना, ग्रुप चलना बंद हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर हम लोग ग्रुप पे उसको इनहेरिट करने का ट्राई करेंगे देन वो इनिशियलाइज ऑन एग्जीक्यूट वैसे सब मांगेगा। सो बेसिकली दिस इज यूआई का सोल पार्ट। हाँ नहीं होएगा टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन एंड कंटेंट फिर भी मर्ज हो सकता है, दैट मेक्स सेंस, बट इट्स जस्ट दैट कि ग्रुप और कंटेंट, ग्रुप फिर अकेला पड़ जाएगा। एंड दोनों का फंक्शनलिटीज थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है। ऑप्शन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली दिस ऑप्शन, दिस इज जस्ट यू नो सेटिंग अप फॉर द एडिटर कंटेंट या वगैरह जो भी है, दिस इज ए कंटेंट, बराबर है। कंटेंट का इस पर कंपोनेंट है, बराबर है, सही है। सो कंटेंट पे सब जा रहा है, सो नेम स्पेसिस में कुछ नहीं रहना चाहिए, राइट। फॉर व्हाट नाउ आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं सारे के सारे मेन्यू नेम स्पेसिस उड़ा दूंगा। आई डोंट वांट मेन्यू,
राइट. अभी मेन्यू एक ही जगह पे बचता है, दैट इज इसके एडिटर स्क्रिप्ट में भी, राइट. एडिटर के अंदर जो है इसमें मेन्यू बचता है, सबको एक साथ सेव करते हैं, राइट. सो एवरीथिंग नाउ एग्जिस्ट अंदर rs.ui. There is no further branch on the namespaces, right, which is not a good thing to be honest. ब्रांचेस बनाने हैं, सो बेसिकली ब्रांच में और क्या क्या आना चाहिए, राइट. विल जस्ट डिटरमाइन दैट. दिस आर लिटरली ऑल द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव राइट नाउ. एंड ठीक है, आई गेस ये ऑप्शन जो है एक ब्रांच में आना चाहिए, राइट. दैट इज untitled branch, right. That is untitled namespace branch, which is correct. फिर आना चाहिए fps उस untitled namespace branch में, बाकी सब बराबर है, right. This is part of the UI group, UI content, UI pop-up, right. UI is that a part of the UI? This is all the part of the UI. This is all the part of the UI. And ना ये आना चाहिए अनटाइटल्ड ब्रांच के अंदर, एक और अनटाइटल्ड ब्रांच में आना चाहिए. सो बेसिकली द ग्रुप एंड कंटेंट शुड बी इन अ डिफरेंट branch, or we can just maybe call them कि मेन्यू कंटेंट या फिर मेन्यू ग्रुप एक क्लास के नाम पे अपेंड कर सकते हैं. हर एक चीज़ को नेमस्पेस पे अपेंड करना कंपलसरी नहीं है. सो ऑल्सो दैट अनटाइटल्ड ब्रांच इज फाइन. एंड या मेकिंग नेमस्पेस डिसीजंस आर नॉट ईजी. इफ़ यू लुक एट यूनिटी का नेमस्पेस वगैरह जो भी है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चनेबल क्लास नेम्स एंड नेमस्पेस नेम्स दिखेंगे तुम लोग को, राइट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेम्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, लाइक कंटेंट ऑक्यूपाइड वगैरह. यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ न्यू स्टफ, राइट, अनलेस यू हैव ChatGPT टू हेल्प यू आउट, राइट. लाइक आई लिटरली हैव, इफ यू सी ChatGPT इधर गया है, आई ऑलरेडी हैव अ सेक्शन दैट सेज बेटर नेम्स, वेयर आई जस्ट pass them this thing and I just keep asking for better names. Like I guess मेरा वही रहेगा. अभी जो ब्रेक में मैंने लिया था, राइट, उसको मैंने बोला कि also suggest names for this method. So उसने इतने सारे नेम सजेस्ट किए, लाइक सजेस्ट वेरिएबल नेम्स, उतने सारे नेम सजेस्ट किए. सो बेसिकली दैट इज मेकिंग गुड यूज ऑफ AI to help you make your code cleaner, right. It's a good thing if you read dictionary ki, if you know more about synonyms, right. like एक ही वर्ड को 3-4 अलग अलग वर्ड्स में बोलना while not changing the meaning is also a good skill to have while you are developing, right. because let's say अभी मैं हर एक चीज़ को बोलने रहूँगा कंटेंट settings layouts, so it's just going to create confusion, right. like कौन सा किसका layout ले रहा था, I have to then remember that manually. if ऐसे 3-4 instances बन जाएगा, it's just going to be super confusing and I've experienced that. so if you know about synonyms, like let's say menu options वगैरह कुछ different नहीं, एक ही बात है, उसमें ज़्यादा क्या सोचना है. बट टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा सोचना है भाई, बिकॉज ठीक है मेन्यू ऑप्शन इस कंटेक्स्ट में सेम बात है, UI मेन्यू UI ऑप्शंस, ऑल राइट फाइन, सेम थिंग, राइट. बट उसको अलग अलग नाम पे लिखा है, क्यों? क्योंकि व्हेन वी ट्राई टू एक्चुअली रीड उसके अंदर का कंटेंट इन अ कोड इन अ रिटन फॉर्मेट, इट्स जस्ट ईजियर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन्यू एंड ऑप्शंस, इवन दो दे बोथ मीन द सेम थिंग. वी कैन जस्ट से लाइक वो मेन्यू के अंदर आता है, वो ऑप्शंस के अंदर आता है, दोनों सेम चीज़ें, लेकिन वो फिर भी अलग कैटेगरी में जाता है ऑन पेपर, राइट. सो यू वांट टू आल्सो मेक स्टफ ऑन पेपर लेस कंफ्यूजिंग, दैट इज़ व्हाई सिनोनिम्स आर ग्रेट, राइट. लाइक एक और चीज़ होगा कि लेट्स से स्पीड. सो कैरेक्टर का स्पीड रहता है, एनिमी का स्पीड रहता है, कार का स्पीड रहता है, बाइक का स्पीड रहता है, प्लेन का स्पीड रहता है. मैंने उठाया
किसका तो स्पीड उठा लिया मैंने किसी तक जिस क्लास से, अभी किसका स्पीड उठाया? ऑफकोर्स मेरे को दिखता है कि मैंने एरोप्लेन का स्पीड उठाया, इसका स्पीड उठाया, ये उठाया वगैरह, बट इफ़ आई वुड जस्ट से कैरेक्टर का स्पीड का बदला विल से पेस, राइट, द पेस एट विच द कैरेक्टर मूव्स। हम लोग बोले कि एरोप्लेन का स्पीड के बदले विल जस्ट कॉल इट वेलोसिटी, राइट, दैट इज़ द रेट ऑफ distance covered over time, right? So we just say कि if I'm fetching velocity it means I'm working with some vehicle, if I'm fetching pace it means I'm working with some human, right? A car does not have a space, a car does not have pace, and an aeroplane or an airborne vehicle also does not have pace. So it makes sense to subdivide this word speed into its synonyms. Pace, velocity, everything means basically speed, right? कि वो क्या स्पीड से जा रहा है, but it just has different names. So it makes it much easier to categorize between every of them, and it just creates less confusion. Like speed क्या है, pace है, velocity अलग अलग चीज़ है, speed नहीं है भाई कुछ। फिर जो speed बचता है व्हीकल पे डाल दो, बाइक पे डाल दो, राइट, व्हीकल बाइक पे स्पीड चला जाएगा, प्लेन पे वगैरह पे हेलीकॉप्टर पे वेलोसिटी चल जाएगा, ह्यूमन पे पेस चला जाएगा, सेम थिंग in three different words. So that's also one of the examples that I demonstrated very poorly, I believe. So I guess मैं अभी के लिए इसको इधर बंद करूँगा. I guess यहाँ पे मैं फिर भी कमेंट डालूँगा ब्रांचिंग. अभी नाम के हिसाब से सब बराबर है, बिकॉज नाम कुछ डाला ही नहीं, अनटाइटल्ड ब्रांच डाला हुआ है, बट फिर भी आई जस्ट से रिकन्सिडर ब्रांचिंग, राइट. इसमें नहीं रहे, ग्रुप पे. नेट मेरे को जस्ट आई गेस ये ठीक लगेगा मेरे को हिसाब से. मैं सोच ही रहा था कब से मेन्यू कंटेंट कैसा लगेगा, एंड मैं बंद करने से पहले मेरे को जस्ट ये देखना कि मेन्यू कंटेंट ग्रुप दैट इज फ्रॉम मेन्यू कंटेंट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड सब कुछ यूआई के अंदर हो सकता है. सो मेरे को ब्रांचिंग करने का ज़रूरत नहीं है, एंड ब्रांचिंग सिर्फ एक चीज़ का चाहिए, दैट इज़ ऑप्शन. आई गेस वो भी चल जाएगा ऑप्शन नहीं रहेगा तो, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया था कि ऑप्शन करके बेस टेस्ट वगैरह जो भी डाला हुआ है, सो दैट इज़ फाइन फॉर नाउ एज वेल. सो आई गेस आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग देयर इज़. मैंने काफ़ी बैक एंड फोर्थ किया, विच इज़ वेरी कॉमन इफ़ यू आर ट्राइंग टू create our own project and you don't want to mess things up, you want to keep things enjoyable, right? Because अभी कुछ भी चीज़ें भर दूंगा, जुगाड़ में सब बना होगा, that is only going to lose my interest in this project. I will not be interested in this project after next sessions or whatever. So it's basically, if everything looks good, इट्स इंटरेस्टिंग. इवन तुम लोगों ने भी स्कूल में भी नोटिस किया जाएगा, बुक में तुम लोग अच्छे हैंड राइटिंग बुक में लिखते हो, दैन वो बुक में लिखने का थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है. लाइक ईच एंड एवरी न्यू बुक यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ गुड हैंड राइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट. लाइक चलो अभी नया बुक बना रहा हूँ, इसका पहला पेज तो अच्छे हैंड राइटिंग में लिखूंगा, फिर बाद में फटाफट लिखते हैं मैं जो भी है, बाद में बिगड़ जाता है, अलग बात है, बट इंटरेस्ट रहता है. जब तक अच्छा हैंड राइटिंग तब तक इंटरेस्ट रहता है. आई डोंट नो इफ़ कोई रिलेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये स्कूल में बहुत पहले की बात है, जब आई गेस 5th 6th स्टैंडर्ड में होता था तब का बात है, बट ठीक है. दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट हाउ इट इज़ राइट हियर, राइट. इफ स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, इट्स मच ईजियर एंड पीसफुल टू लुक एट, और पीसफुल टू थिंक अबाउट और मेंटेन एंड सो ऑन, राइट. सो आई गेस अभी मैं ये लेक्चर इधर ही बंद करता हूँ. 8 बजे के बदले में मैंने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए, विच इज़ फाइन, बट कितने लोग देख रहे हैं? 1 वॉचिंग. ओके, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. बाय बाय.